guys, welcome to another episode of Kya Lag Raha hai Expiry, the Expiry live stream with ICICI Direct. As usual, we have our derivative head, Mr. Rajdeepak Singh from ICICI Direct, and Mr. Dinesh Nagpal, who's a technical analyst. So, Rajbhai, Dinesh sir, we'll start with you. We'll start with you, Rajbhai. What is Nifty right now is trading near 19,485. लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ रेंज एट द मनी के आसपास थोड़ा निफ्टी चल रहा था एंड यू went bearish on 19400 put option, reached 19700 put option if I'm not wrong, and it went from 28 to almost 100. So can we just have a view last time जैसे एक और कॉल हो जाए इस बार भी? Thank you, Gaurav, for having me today. But again, I am not getting positive vibes from the market. People might be betting for the recovery. I am not. I believe that market may try to close today near the day's low. Whether that low is today's low, somewhere around 19507 in future only, or it will breach that also, that I'm not pretty sure. But yesterday's lows of 19425 in spot, that is likely to be revisited. And for me, it should be more of a sell on rise instead of buy. So yes, as of now, my data is clearly suggesting that market is will remain under pressure. We might be heading towards further low levels than we are right now. So I am expecting कि अगर कोई भी pullback आता है, then either buy puts or sell calls. So my stop loss would be somewhere close to days high. मुझे नहीं लगता कि कल रिकवरी के बाद जो भी लेवल्स आए हैं, अगर मैं स्पॉट पे देखूं तो ठीक है, कल का मार्केट बहुत बड़ा था, बट समवेयर अराउंड 550 I'll keep my stop loss for spot. But till then, it is more of a sell on rise for me. Okay, so this looks like a sell on rise market for you given the data and everything. So 550 का stop loss ऊपर में, नीचे में we'll talk about it कि नीचे के levels क्या बन रहे हैं, because it's just 12 p.m. and we are approaching the expiry end. So by the time we reach 2 p.m. we'll definitely have some trade from your end as well. Dinesh sir, can we see the chart of Nifty? That what do you feel? Yeah, one second. Yeah. So Nifty, yesterday in the lower time frame made a bullish harmonic Gartley in the lower time frame, which saw the bounce yesterday only, और फिर आज वही pullback हुआ है. तो but even from that bullish angle जो Gartley formation कल हुआ है, उसके बाद भी आज कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं. आई कांट सी अ नॉमिनल भी स्ट्रेंथ कोई हैवी वेट में नहीं दिख रहा है मार्केट में. सो इवन फ्रॉम अ बुलिश एंगल से देखता हूं तो कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, स्ट्रेंथ तो बिल्कुल मिसिंग है मार्केट में आज. और लाइक राजभाई सेड, कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज ये वीक का जो सेंटीमेंट था फ्रॉम लास्ट एक्सपायरी टिल yesterday थोड़ा सा बेरिश ही था. वी कंटिन्यू टू मेक लोअर हाइज लोअर लोज, और कल का जो स्मैकडाउन हुआ है उसका एक एंड के तरफ में, बिकॉज अगर आप ऑप्शन डेटा देखो और ओपन इंटरेस्ट ऑफ हर पार्टिसिपेंट अगर आप चेक करो तो क्लाइंट्स आर अप्रॉक्स 5 लाख प्लस नेट पुट शॉर्ट. मतलब we consider all the clients who have gone who have bought puts versus the clients who have shorted puts, तो नेट शॉर्ट है 5,25,000. और ये शॉर्ट 3 दिन से चल रहा है. इट हैड गॉन अप टू 6 लाख. मतलब उन्होंने अपना पुट शॉर्ट्स अभी तक कवर नहीं किया है. या तो वो नीचे के तरफ एडजस्ट कर रहे हैं या वो होल्ड कर रहे हैं कि मार्केट बाउंस बैक मार देगा. और जब जनरली ऐसा सिनेरियो होता है मार्केट में, व्हेन वन पार्टिसिपेंट इज वेरी हेवीली ऑन वन साइड and the market is going against that participant, the trend does not work like that. Because आप imagine करो, majority are short 5,25,000, तो उनको majority को इतना जल्दी रिकवरी चांस नहीं देता. So today it looks like a very very muted to could be a possible towards 230 के बाद एक फ्रीक लो भी मार दे, कोई भरोसा नहीं आज मेरे हिसाब से. And as we speak, Nifty has come down to 19,470. So yeah. I think Rajbhai, there is one call from our end in the I click to gain, that is to sell the 19,550 call. I think I remember the call जो आपने recommend किया था ICICI के channel पे on the portal was 19,550, if I'm not wrong. Rajbhai?
Okay, I think he's facing some issue. So Dinesh sir, this was Nifty. Can we see Bank Nifty? We'll take the trades from Rajbhai in some time. We'll just Yeah. go and So analyze the index. Bank Nifty also yesterday was a lower time frame bullish bat formation, जिससे हमको एक वो muted last 1 hour, वो typical होता है towards the closing, जितना बड़ा fall, many people are booking their profits. जो डेटा में भी वैसे ही आया, there was a lot of short covering from people yesterday in the market. आज वो फिर वापस pull back मार रहा है. अगर ये पुल बैक यहाँ नहीं रुकता है ड्यू टू से वॉट एवर सर्कमस्टेंसेज और प्रेशर आता है, तो नेक्स्ट स्टॉप इज स्ट्रेट अवे नियर 44,600, विच इज अनदर 170 पॉइंट्स डाउन. और कोई साइन नहीं दे रहा है फिलहाल रिकवरी का, बिल्कुल. एक अगर हम उसको बिकॉज अगर आप देखो ये यहाँ पर आज जो मॉर्निंग का लो है, इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, 10-15 कैंडल, पहले लोगों को लग रहा था कि डबल बॉटम बनेगा, फेल कर रहा है. इट्स नॉट इवन ट्राइंग टू डू अ डबल बॉटम राइट नाउ. सो ट्रेमेंडस प्रेशर है बैंक निफ्टी पर भी. इनिशियली आई थॉट कि कल जैसे रिकवरी मारा कि 45,000 का स्ट्रैडल शॉर्ट वुड हैव वर्क, बट नो, द ओपनिंग वाज ओनली सो बैड कि वो डगमगा रहा है इस साइड में. निफ्टी फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल में है, ये तो नहीं है बिल्कुल. ओके राज भाई, कैन यू हियर मी? अभी आपका नेटवर्क ठीक है? हाँ जी, बताइए. देखिए, जैसे बात करते करते आपने कहा आपका व्यू बेरिश है. निफ्टी पे लेता हूँ मैं, आपको बैंक निफ्टी में बाद में लेके आता हूँ. आपने बेरिश कहा, वैसे ही हम ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स नीचे आ चुके हैं वहां से. वी आर एट 19,470. सो एनी पुट बाय और कॉल सेल रिकमेंडेशन राज भाई एट दिस लेवल? I will still go with the 19,450 put buy. Okay, 19,450 put buy. Okay. Yes, the problem is with the stop loss. Okay. Last time also our stop loss got triggered, right? Call side पे and put side पे you had clearly said that now it is up to you, and जिन्होंने hold किया they would have made 3x 4x for sure, Yes. because it went from 28 to 100 almost. Yes, तो मतलब as of now I would wait कि ये हमारा जो put option है ना, if I get it somewhere around 26 or 25, okay, so that would be a good entry opportunity for me. Okay. और otherwise if someone wants to go for the ATM put, मतलब आप अगर ITM put में 19,500 का put देखना चाहते हो, तो इसका प्राइस मैं बोलूंगा कि somewhere around 32. Okay. वो अगर मिलता है तो फिर हम लोग बाय कर 32 सॉरी 42. अगर 42 के आसपास मिलता है तो हम बाय करके मैं मतलब मार्केट में इस तरीके की नेगेटिविटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि परहैप्स वी माइट इवन ब्रीच यस्टरडेज लो. जो भी हमने रिकवरी सेकंड हाफ में देखी थी, दैट माइट बी डिस्कार्डेड एंड वी मे मेक अ फ्रेश लो टुडे. सो इसलिए मतलब ठीक है, एज ऑफ नाउ वी आर एबल टू होल्ड यस्टरडेज लो, बट वंस इट इज गेटिंग ब्रीज्ड, तो परहैप्स वी माइट सी अ वन वे मार्केट डायरेक्शनल मूव. और ऊपर आ रहा है तो दैट इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. आई वुड से कि आपका 19,500 का पुट इज समवेयर अराउंड 52 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अगर ये मुझे 42 के आसपास मिलता है तो आई विल डेफिनेटली एंटर इन दिस. ओके, so basically Rajbhai, right now 19,500 put is trading at 56, so your level is near 42. मतलब यहाँ पे अब तक वो लेवल आया नहीं है, मतलब it is up, मतलब the entry level is not perfect. My entry level not 42, 52. 52. Okay. 52. Yeah, Okay. 52. So viewers who are listening, Raj Deepak's recommendation for Nifty put is ATM 19,500 near 52. It is trading near 57 right now, 57. So it is just 5 points away. So it is up to you whether you want to enter right now or at 52, or that is Raj Deepak's recommendation for ATM put. And for 19,450, Rajbhai, what is your suggested buy price? मैं इसको अभी भी बाय कर लूंगा. अभी बाय कर लेंगे आप तो. ओके, तो बेसिकली का लेवल मिलता है तो आई एम कंफर्टेबल बाइंग समवेयर क्लोज टू 28 to 30. Okay, so basically 19,500 put near 52 and 19,450 at current market price, which is trading somewhere near 30 rupees. I think that is the level when one can buy this. For with stop losses, we'll give the stop losses going ahead in the session. Will that be okay, Rajbhai? Yes. As of now, I don't want to trade with the stop loss today. Okay. So Rajbhai, this was Nifty. So two recommendation from your end, that is 19. स्टॉप लॉस का इस तरीके से देखूंगा गौरव, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन प्राइस पे स्टॉप लॉस डाल रहा हूँ ना, तो बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी माय स्टॉप लॉसेस आर गेटिंग ट्रिगर्ड एंड कंसीडरिंग सेटलमेंट उसमें और ज्यादा बड़े मूव्स रहते हैं.
So I will keep my stop loss in Nifty spot, and what I've told you कि until unless 19,550 is not getting reached, I am Yeah. not turning positive for the day. Okay. Okay. Okay, fine. So basically, you're giving stop losses in a spot 19,550 going ahead. I think 450 के लिए वो almost zero hero type हो गया because वो वहां पे गया तो zero हो ही जाएगा. तो basically 19,450 becomes a zero hero call, but that is 30 का zero. मतलब you are giving that level. Targets for 19,450 राज भाई 30 रुपीस का आप क्या टारगेट फर्स्ट ले रहे हैं? हाँ, पहले तो कल का हाई एक बार होना चाहिए, तो दैट भी मतलब मस्ट बी डबल फ्रॉम द करंट लेवल्स. Okay, 19. Okay, so I'll just put it in the chat for our viewers. Recommendation from Rajdeepak. You are putting this in chat. Yeah, just put it in the chat. 19,450 put buy at CMP near 30 basically, and 19,500 put near 52. Right? I put it in the chat. I think बात करते करते spike is coming in the put premium. तो वो है राजदीपक. इसके बाद कैन वी मूव टू द बैंक निफ्टी एनालिसिस? लाइक व्हाट इज योर व्यू ऑन बैंक निफ्टी? तो निफ्टी की बात रही. Bank Nifty, last time also we have discussed the same thing, ki financials are weaker than the broader market. So if you'll see, then आपके कुछ heavyweights हैं who are able to hold Nifty, but banking itself is quite weak. So for me, people are still expecting that expiry could be somewhere close to 45,000 or above that. But I will not get into those things. I will remain negative here as well. So आई वुड से यहाँ पर आप बेयर रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में थोड़ा सा हमारे पास प्रीमियम है जिनके अगेंस्ट हम लोग कर सकते हैं. बट ऑन इमीडिएट बेसिस अगर हम लोग 44,800 का पुट देखें तो दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 120, राइट, 121. हाँ, तो थोड़ी देर इसको रुकते हैं. मेरे ख्याल से अगर ये 135 के ऊपर जाना चालू करता है तो वी शुड लुक इनटू दिस. Okay. Might spend some more time, another half an hour in this range, somewhere close to 44,800. But for me, I'm still bearish. So अगर उस तरह से खेलना है कि हाँ चलो लेके छोड़ देना है, तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ 44,700 का पुट देखा जा सकता है. बट 44,800, 120 या 118 is a good level to get into. थोड़ा सा कंफर्मेशन आएगा if it starts trading above 135. Okay. One second, huh? So I can see a lot of people asking a lot of questions in chat. तो मैं chat ले लेता हूँ, तब तो chat से questions ले लेता हूँ. राज जी आपका वेलकम हो रहा है सर, आपका भी. Someone is asking about. Okay. Naresh Ogre asking 19,500 buy can sell. Okay, Naresh sir, 19,500 buy. Can I ask you, are you buying a put or buying a call? We need to know the strikes, then we can give you any. I think Viral, how to bear put spread. So yes, one can do that. Bear spread bear is put spread. I am not. I hope it is. Gaurav Joshi, entry price was at CMP. It was trading near 30 rupees then. Now it is at 35, and 19,500 has moved to 66 from like 58. It did not trigger our buy price, I guess. But 19,450 near 32 was a recommendation from Mr. Rajdeepak, and it is trading at 8 points upside. Okay, hello Shweta. United Breweries, ICICI Direct has released a quant pick. You can log into our Telegram channel. You can join our Telegram channel. That quant pick has been given with a target of 1750, and that pick is released by Mr. Rajdeepak himself. So Raj bhai, 1750 का target है, right? हमारे quant pick का for United Breweries Limited. right. Yeah. Okay. Bank Nifty next support. Okay. We'll take the Bank Nifty trade first, and then we move on to the Fin Nifty. We won't take Binod because Fin Nifty expires on Tuesday. Today we are trading for Nifty and Bank Nifty expiry, so we'll focus on these two indices as well. Only these two indices and some certain stocks. So Dinesh sir, anything that you are trading? गौरव, ये जो 44,700 का पुट था वो ऑलरेडी 108 का हो Yes, गया. ये वो already वो तो भाग चुका है. ये रहा 44,700 का.
यहाँ इसके ऊपर तो पगला जाएगा ये 120 के ऊपर, मतलब रुकेगा नहीं फिर, एकदम काफी स्ट्रांग हो जाएगा। या सो माई, लाइक आई सेड ना, वो जो गाटले कल बना उसको लेके थोड़ा पुल बैक आया। तो टुडे मॉर्निंग आई वेंट इनटू दैट 19500 स्ट्रैडल, जो इट्स नाउ बैक टू ऑलमोस्ट माय कॉस्ट। नीचे 80 गया था, वापस अब ऊपर स्पाइक मारा है इन दिस फॉल। तो आई एम अ बिट नाइन ऑलमोस्ट बैक टू माय कॉस्ट है 90। सो इफ इट पुशेस अबव 100 तो आई विल बी आउट ऑफ द स्ट्रैडल एंड देन डायरेक्शन खोजूंगा। नहीं तो मैं वेट करूंगा एटलीस्ट फॉर अनदर आवर और सो कि ये क्या करता है इधर में पूरा दिन, बिकॉज लक्षण तो ठीक नहीं है चारों एंगल से। कोई स्कोप नहीं दिख रहा है मेजर रिकवरी का मुझे। Perfect. Just give me a moment, sir. I mean, if you look at the data, last 15, as when we started speaking, look at the Yeah. change in the 19,500 call OI build-up. Massive build-up हो गया यार ये 2 लाख का। Exactly. It was hardly 1,70,000 odd. लास्ट 15-20 मिनट में पागल की तरह बिल्डअप आया है इधर में। अपना जो हम लोगों ने 450 का पुट की बात कर रहे थे, तो उसने अभी 45 का हाई मारा, उस वक्त वो 31 का था। हाँ 30 का 45 का हाई हुआ है। राज भाई, people are asking for the target for 19,450 put option. I think people have bought it. Guys, if you have bought it, if you like this, please send a thumbs up. Please click on the like button for us, because it gives us a motivation to get more trades, and हमारे लिए थोड़ा सा वो winning है, हमारे लिए वही काफी है आपकी तरफ से। Your thumbs up and your likes, that's more important for us. राज भाई, target for 19,450 put 60. Okay, 60. We'll review at 60, right? We'll review at 60. See, for me, in the expiry days, see what can happen कि आपका अभी 45 है, next tick could be itself आपकी दोबारा से 30 की हो सकती है. That's not a big deal. But it's more about the bias, the more about what we are discussing right now कि हाँ क्या market में strength है. So for us, I believe Dinesh sir also has the same said the same thing. We don't expect much market recovery. Anything, if there is a recovery, then it's again a selling opportunity of how you are going to sell, either through selling call options or buying puts. Yeah. So we are more of a bearish. The way you can place your trade is up to you. Absolutely. So we'll take right now. I think we'll hold on with this recommendation only, that is 19,450 and 19,500. 19,500 I think I'll give it a skip, because 52 जो आपका buy price था राज भाई, वो नहीं आ पाया. But I had told कि if you are okay buying right at 58, I hope someone would have bought it. So if someone would have bought it at 58, any targets for that strike as well, Raj bhai? See, for me, I am expecting somewhere close to 19,400 spot level. So I believe corresponding level could be close to 100, 105. So that should be the price which I am looking at for your 19,500 put. And similarly, because of the same, I give the target of 60 in 19,450 put. Okay. So we move on. I'll take some questions. If you have any questions about any Nifty P bought and sold, bought 2,700 profit. Thank you. Okay. Thank you, Vamsi. It's all Rajbhai and Dinesh's analysis. That's there. Any stocks? If you have any doubt about any stocks, we can definitely help you out with that. If you want us to do any analysis on any stock, you can put it in the chat box. We are more than happy to do that. Nifty P, great call, Raj bhai. Comments are coming thick and fast for you. Polycab, okay, Polycab. Dinesh sir, any view on Polycab? उसमें थोड़ा सेलिंग आया है, माना काफी सेलिंग आया काफी दिन के बाद, लाइक उसमें जस्ट लेट मी ओपन Polycab. Let's go back to the higher time frame chart. Yeah. Sideways के बाद, no traction, pushing its way down. I don't see any recovery happening before 4,450. उधर तक तो आने दो एक बार, another 100 points आना चाहिए उसमें at least, तब देखेंगे उसको. या यू कैन सी दिस क्लाउड है इधर, थोड़ा सपोर्ट है आज, है ये वाला लो. एक बार ये लो ब्रीच करेगा 4516, तो वी कम ऑल द वे डाउन टू 40, मे बी इवन 4350 इसमें.
कोई अभी तक कोई स्टैंड नहीं दिखा रहा है रिकवरी का। See, Okay. Dinesh, ji just wanted to add couple of things here regarding Polycab. So market is factoring that stock will be get included in MSCI index. Okay. So I believe the upsides what we have seen from 3,500 to 4,600 are largely taken care of that. So from here, if someone is long, थोड़ा सा स्टॉप लॉस है, आप मतलब यू कैन एग्जिट, बट यहाँ से फर्दर अपसाइड्स देखना, आई वुड से ईदर इट विल गो इनटू कंसोलिडेशन और एक्सटेंडेड प्रॉफिट बुकिंग यू माइट सी। तो स्टॉक यहाँ से 10% करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कंसोलिडेशन करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बट यहाँ पर लॉन्ग करने की एडवाइस मेरे एंड से तो मतलब मैं उसको बोलना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। Okay. देखिए ना, इतना आप बड़ा लोगों को मैं लॉन्ग रोक रहा हूँ कंसोलिडेशन है, आप लोगों को मैं रोक लॉन्ग रहा हूँ कि कंसोलिडेशन। बात नो, करते दिस करते स्टॉक हैज अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग दैट, गौरव। एकदम बहुत यानी लंबा आई एम स्ट्रेच कर स्टॉपिंग देता है यू साइड। बिकॉज निफ्टी इज एट डेज लो। या निफ्टी या इज या एट डेज लो, राजभाई, निफ्टी इज एट डेज लो। UBL call is in future. The quant pick is in future, not a cash pick. Okay, No, that is Quantic already is in published on cash. our. No, Quantic is in cash. Somehow, when we have a bigger stop losses, so we don't advise through futures. Okay, We are positive, but we advise clients to buy in cash only because the stop loss is a bit bigger. If you buy through futures, then the probability of getting triggered or making huge losses are there. So that's why in Quantic we only recommend if you can buy okay, through cash. Rajbhai, I'll just put some views from my end. These are just my analysis that I'm seeing in Nifty. Nifty 450 put has breached 50 का mark. 19,500 का put पे highest OI खड़ा था. Now the put writers at 19,500 are trapped, and we are seeing this one side move downside नीचे की तरफ. Is there a possibility of seeing 19,400 put writers being trapped, so that if that goes in, then we may trickle down to 19,300? Because usually expiry day पे ये होता है, जब फास्ट सेलिंग आती है तो नीचे के भी पुट राइटर्स बहुत जल्दी ट्रैप होते हैं, and we see covering in that level as well. So after 450 success, because it is at 53 55 50 53 I've seen, so it is almost doubled from what you had suggested. Do you have any more recommendation? Can we see, can 19,400 put option be bought at 26? Um, I want to say yes. I am expecting continued decline. बट क्या होगा ना कि एक छोटा सा भी एक अप मूव आएगा और हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो इफ समवन हैज मेड मनी, so he can further deploy that money in 19400, he can roll their money to 19400 put strike. So I am expecting that market में weakness जो है it just started. Okay, क्योंकि अब अगर मैं अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का वेट करूंगा तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 100 पॉइंट्स रिकवरी इन द मार्केट, राइट? right. वो तो अब मेरा मतलब उसके चांसेस कम है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस उसके नीचे भी नहीं हो सकता। आई डोंट वांट टू जस्ट मूव स्टॉप लॉस लोअर बिकॉज़ मार्केट हैज कम डाउन, Right. और देखिए बैंक निफ्टी ने तो अपना काम कर दिया। 700 का हमने Yes. पुट की बात की थी, ये 44,700 के नीचे आ गया, वो पुट हमारा एटीएम बन चुका है अभी। अभी तो वही बस someone in the chat is asking 44,700 के पुट का टारगेट क्या है? सर डबल अगर हो गया है तो हो गया हमारा टारगेट। Okay, if your money, if the premium is doubled, the target is achieved, you can exit from that put of 44,700 in Bank Nifty. That time it was somewhere close to 80, right now it is 205. Okay, so the target is achieved. Target achieved in 44,700 Bank Nifty call. So Raj Deepak is asking to book profit here. और राज भाई निफ्टी का क्या करें फिर? 60 का टारगेट दिया था आपने, टारगेट आप रिवाइज करना चाहेंगे कि आप उसी के टारगेट पे लोगों को बुक करने के लिए एडवाइस करें? मैं कह रहा हूँ ना कि आप चाहें तो अपनी पोजीशंस को रोल कर सकते हैं नीचे की तरफ। देखिए इट्स ऑल अबाउट द व्यू, वेदर योर व्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव। राइट नाउ माय Yeah. व्यू इज नेगेटिव, आई स्टिक टू माय व्यू, आई विल नॉट चेंज माय व्यू कि मतलब ठीक है गिर गया तो अब चलो पॉजिटिव हो जाते हैं, आई एम स्टिल नेगेटिव। Yeah. तो इधर यू वांट टू रोल योर पोजीशंस, यू कैन रोल योर पोजीशन टू द लोअर स्ट्राइक, आपने एक प्रॉफिट अपना कमा लिया, उस प्रॉफिट को ही आप आगे डिप्लॉय कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसी को होल्ड करना चाहते हैं इसको भी होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रॉफिट को आप ये चाहते हैं कि हाँ जो बन गया है इसमें मैं थोड़ा सा और कमा लूं, तो आप चाहें तो 19,350 का पुट राइट कर सकते हैं, या 19 मतलब उसमें आप 10-15 रुपए आप अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। ओके सर, मैं राज भाई मैं ना एक बार ये कर देता हूँ, आई जस्ट मैं सम अप कर देता हूँ। एनीवन हु हैज बॉट बैंक निफ्टी 44,700 का पुट या एनी पुट वो टाइम पे एटीएम पे भी,
The target was double. अगर आपका put, if your put's value has doubled, exit. Raj Deepak has asked कि आपका पैसा double हो चुका है, you made double the money, you can exit your position right now. For Nifty, that is 19,450 put. The target suggested by Raj Deepak was 60. You can wait for 60, or if you have already made money, you can roll it to 19,400. That is up to you with that, because आपका पूरा cost cover हो जाएगा. There is no chance of loss now in that, because that has given you 26 rupees profit and it is trading at 26. So आपका loss नहीं होगा. ठीक है, तो this is up to you. If you want to roll, you can roll it to 19,400, or you can trail your stop loss for 19,450 put, which is trading near 52, 53 right now. You can trail there. ठीक है, and if someone wants to make a spread, can sell नीचे में 19,350 का put. Is that right, Raj bhai? नीचे में 19,350. Yes. Okay. So this is the trade, and I think we'll not add any more trades, because let us ride our winners. That is the first rule of market. आपके winners ride होने चाहिए. And right now 19,450, 19,500, 44,700, all were our winners. Let us ride them and make some more profit. That's what Raj bhai is trying to say. And बात करते करते we are near yesterday's low, and if we break that, we may see more intense selling. That's for sure, Raj bhai. And I think we have breached yesterday's low. Nifty is heading towards 19,400. It's a one side rally. It is not stopping now. So I think Raj bhai, 19,450 है तो उसको hold करना चाहिए मेरे ख्याल से. Again, up to you. Trade stop loss के साथ. Viewers, please, if you have made some money, if you like our views, please send a thumbs up. Please hit on the like button. It is our motivation to come every Thursday for you guys. It is a new initiative from ICICI Direct to help the retail investors by giving them proper advice, and it's not a Telegram channel which is giving you a random tipster advice. It is a proper researched advice from the derivative head of ICICI Direct. So we appreciate your liking our thumbs up that we get. That's our bonus. We can say that. Okay. Yeah, So Gaurav, Raj bhai, moving on. Yeah, Gaurav. So you were speaking 44,770 में कि बैंक निफ्टी 44,600 आ सकता है अगर लो टूटा, और हाँ. कितने स्पीड में आ गया 44,600. Exactly. पता विंग कैन मिस है ये मार्केट इस समय. Absolutely. स्पेशली इफ यू नो जो बायस रहता है लॉन्ग रहने का. टुडे वाज आल्सो वन ऑफ दोस डेज की if you are a person who only looks to buy, it is better you stay away from the screen, because wing can miss है. आपने लिया और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बस आपका पूरा अकाउंट इधर उधर हो जाएगा. Exactly. Yeah, good. Yeah. So yeah, we are at base low. I usually am not happy when Nifty goes down, but I'm happy because the view was right, and I think we have saved money for a lot of people who are long here. Next question I'm asking is, I'm getting something. Varun Beverages, Bharat sir, it is not in FNO. This session is only for FNO traders, so we will not take that. We're getting a lot of thumbs up. Raj bhai, thanks for the profit. That's great. Sir, any view for CE for Apollo Hospital call side? People asking long side पे view पूछ रहे हैं. Apollo Hospital and persistent system. So Dinesh sir, can we have the chart check and then we'll move for Raj Deepak's recommendation on that? Just let me open at my end also. Yeah. So Apollo Hospital, the nearest support I can see on screen is near 4,850. It's a bearish harmonic reversal. इसमें bearish harmonic reversal हुआ है weekly वाला. Okay, just let me take it to the weekly. Yeah. ये bearish harmonic reversal है. There is no major support till this level out here, 4,650. तब तक तो इसको एकदम मतलब it's not something you want to catch a falling knife. थोड़ा सा तब तक दूर. Of course, at the same time यहाँ पर पैनिक करके शॉर्ट भी नहीं बनता है, बिकॉज बहुत ऊपर है स्टॉप लॉस, बहुत ऊपर. स्टॉप लॉस इज ऑलमोस्ट हियर इसका. तो इट्स राइट नाउ टच मी नॉट. Okay, you booked at 97. Abhijit sir, you booked 19,500 put at 97. That's great. From 58 to 97, that is almost double. Not double, but
at least 40%. Viewers, if you're seeing this and you are active on Twitter, then you can tag ICICI Direct that you made some profit or anything if you like. If you can give us a shout out on any social handle, that would also be great. This is just a request from us, nothing else. If you want, you can, or else you can not. To you. Okay, Rajbhai, we are near 19410. अब 19400 का पुट भी 26 रुपीज पे जो आपने सजेस्ट किया था वो भी 33 रुपए के मतलब 34 पे आ चुका है वो, तो अब उसके ऊपर बोलिए क्या करें? होल्ड करें, होल्ड करें। एंड 19450 इट है 64, उसको भी अगर किसने बुक नहीं किया है तो ट्रेल स्टॉप लॉस एट 55 और 50 रुपीज, एनी ट्रेल स्टॉप लॉस? देखो ट्रेल स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, बट मुझे क्या लग रहा है कि अगर ये जो अभी जिस जगह मार्केट खड़ा हुआ है ना, इट माइट मतलब आप यहाँ से 50-60 पॉइंट की और यहाँ मतलब आप देखोगे ना, अगर डेटा देखोगे तो पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल। जो जिन लोगों ने कल जिनके पुट राइटर्स जो भी थे उन्होंने जाते जाते जो रिकवरी आई है, दे हैव सोल्ड मैसिवली 19500 पुट। People were not expecting this decline, and even then, even today people are trying, okay, they are expecting some recovery. What I think that key still market is poised to close near the lows, जो हमने बोला था बिल्कुल सेशन के स्टार्ट में ही। तो एक बार के लिए अगर चाहो तो निकलो और ऊपर आने का वेट करो और दोबारा से बाय करो। दैट कुड बी द वन एक्सरसाइज व्हिच वन कैन डू। अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करिए। मतलब अभी हमें अपना जो हमने पैसा बनाया है, जो पैसा बनाया उसको रोकना इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस। यस, दैट्स राइट। अगर आपने 500 450 का पुट ले रखा है तो आप जो है 350 के पुट को बेचिए, तो थोड़ा सा वहां से पैसा आएगा। तो स्टॉप लॉस आपने जो खरीदा है उस पे ना रखने के बजाय आप उसका रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं ओटीएम पुट बेचकर। आपका मार्जिन भी ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि आपको स्पैम के बेनिफिट मिलेंगे। That's right. That's right. Mohan Murli sir, there's no re-entry here. Raj Deepak is suggesting to sell 350 ka put. What will happen is you will safeguard your profit completely, and that's because that will become no cost, because 28 rupees pe people have bought it. It was bought at 28.30 rupees, and 19,350 put is trading somewhere near 13 rupees. So the costing becomes only 18 rupees, and you are in profit. So that will be the best thing to do is sell 350 put. Or still, if you don't want to sell 350 put, you can trail your stop loss. Please safeguard your profit. Do not look for re-entry here, because once a winning trade second time can be a losing trade. So we are not here to lose money. We have made a profit, locked a profit. Let it be locked. Please be in green. Do not be in that haste of over trading. Don't impression of over trading, because over trading may lead to losses, and we are not here to make losses. So please do not avoid re-entry. Please avoid re-entry. If there is some new trade from our end, Raj Deepak is here. He will definitely suggest it. Okay, I'll take some questions from the chat. Rajbhai, question is on Nestle India. Someone's asking view on Nestle India for call side. मतलब किसी को ये करना है. Someone wants to play long in Nestle. So any view on Nestle long? Not right now. Not right now. I will buy this stock only over 23,100, not before that. So no call option buying at CMP. No call option buying even if it recovers a bit. I will only buy if it starts moving up or sustaining of 23,100 level. Okay. Just a minute. I'm going back. My laptop's battery has gone down. Just give me a minute. I'll be back. तब तक दिनेश sir, Rajbhai, there is a question on persistent system. So if you can take persistent system on chart and derivative view, please. See, entire IT pack, particularly persistent, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जो पॉलीकैप के लिए बात किया था, सेम applies to persistent also. This is the stock which is likely to get included in MSCI. और आप अगर देख रहे हो तो इट है, अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है स्टॉक में, तो आई वुड से कि द बेस्ट केस फॉर द अपर लिमिट समवेयर close to 4850 to 4900, and it might decline towards 45 or even below those levels in the coming sessions. So as of now, just avoid, don't buy the stock. If it is able to sustain above 4850, then only please look into it. Otherwise, the consolidation
or the weakness may extend further. Okay, so why it is that? Okay. I think I have lost my data. Dineshji, can you just tell me what is the spot price right now? Persistent. Yeah. No. Nifty spot. Nifty spot 19414. 413. 414, हाँ वही है. एक 13, second. 14, yeah. हाँ. And future is 55. फ्यूचर नहीं लगाया मैंने. 1 second, future I'll tell you. Total is 85, that's right. 485. 85. 70 का प्रीमियम चल. ठीक. Okay. So Gaurav, persistent. Yeah. I feel 4600 is a Lakshman Rekha for that stock. अगर वो 4600 संभाल लेगा तो कुछ कंसोलिडेशन के बाद we can expect some upward movement possible. But by chance अगर वो 4600 नहीं होल्ड कर पाता है कंसिस्टेंटली, तो देन जो राजभाई का टारगेट है डाउनसाइड का वो एप्लीकेबल हो जाता है उसमें. The only factor which I am looking at IT is that with banking so weak right now, जो bashing हुई है बैंकिंग में, the index management, which dependence the Nifty manages is with IT. So from that angle, IT could be a different, and IT tends to be contra to the overall trend of the market. So 46 very important for me. Okay. That was for persistent system. Okay, Rajbhai, you want to anything you want to suggest on Nifty again? Because demand में हो अभी. देख, मैं अभी भी नेगेटिव हूँ. मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे मार्केट में पॉजिटिविटी देख रहा हूँ, तो बस एक चीज बोलूंगा कि अभी भी कॉल मत बाई करिएगा. That's the only thing which I can suggest. Please don't buy call. Don't expect for the market reversal. And if it moves up, that could be an opportunity to buy puts once again. Okay. Or yes. Basically, you're saying कि it is about sell on every rise market and there is no rise. Basically, अगर आप देखोगे rise भी नहीं है. हमने जब session start किया था, we were somewhere near 19480, 485. Now we are at 19,411. And it was a one side waterfall basically. एक तरह से हाँ, one side waterfall. इस वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि आपने बिना किसी एक भी पॉजिटिव कैंडल के, वी हैव सीन दिस लास्ट हाफ एन आवर और 45 minutes of one way move. So if it is like that, then okay, on decline you shouldn't buy put. So I would wait. That's why I said keep holding the positions, sell OTM puts. Don't go for the trail stop loss, because उसमें आपका जो है पैसा because of the volatility वो हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. अब देखिए, जो हमारा पहला टारगेट था वो आ गया हर एक में, मतलब 450 पुट इज. I think 19,400 का टारगेट भी is also on its way, because आपने 26 पे कहा था. That is near 35, 36 right now. That is also gained 10 rupees. And 450 तो वावा, it is at 67 or almost more than double. 500 भी almost double के पास ही है. तो I think 19,400 के लिए जो लोग हैं जिन्होंने बाय किया हुआ है, they can still stick with that put, because now we are again near day low territory. That is 404 was our low and we are near 19,406. And राजभाई, याद है मैंने आपको एक चीज पूछी थी कि 19,500 का पुट राइडर ट्रैप हुआ है, वो नीचे की तरफ जाते जाते नीचे वाले स्ट्राइक पे भी प्रेशर डालेगा. एंड नाउ जैसे ये मूव आया है, आई थिंक 19,400 का पुट राइडर is at risk, because when we started this session we had 1.9 CR तक के put writers at 19,400 का strike. Now that has come down to 1.5 CR. तो around 40 लाख put writers वहां से निकल चुके हैं. And I think if Nifty sustains below 19,400 even for 10-15 minutes, we'll see another trap and we may move I down. would say party has just started for the Exactly. We have broken 19,400 as we speak, Rajbhai. So I think 19,400 before the session itself, what I told you, when we are what exactly we can test today. So मैंने मतलब I was of the opinion that we might test 350. So that's why even I told कि अगर हमें कुछ sell करने हैं put, तो we can sell 19,350 put, क्योंकि वहां पर जो so that is the target for us. But अभी इस वक्त क्या है कि हमारे सारे के सारे put almost double हो गए हैं. Exactly. और यहाँ पे नया एंट्री, यहाँ पे सजेशन ठीक नहीं है. मतलब anyone who has made money, great. मतलब जिनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ट्रेल स्टॉप लॉस, इट्स ओके. मतलब you have made money, that's more than enough. Making money is important.
ये नहीं तो अगला एक्सपायरी है, because I think this is the third session we are doing, and third session in a row we have like Raj bhai and Dinesh sir both have got the move in the right direction. In spite when things were looking bullish, Raj last expiry though things were looking very bullish, but we went out against the trend and said that नहीं यहाँ पे bearishness आ सकती है, and that's what happened in the final hours of the last expiry. Today तो ये 12 बजे से ही अपना रंग दिखाने लग गया है, तो आई थिंक पार्टी हैज जस्ट स्टार्टेड एज वर्ड दैट्स जैसे राज भाई ने कहा। तो राज भाई पार्टी स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा बैंक निफ्टी में कुछ स्ट्राइक या कहीं पे कोई दिख रहा है आपको? 1 second, Gaurav, sorry to या या disturb. या या One more reason इस लेवल पर, even if अगर बैंक निफ्टी का सेलिंग अगर एग्जॉस्ट हो रहा हो तो भी, राज भाई, look at Reliance. It is breaching yesterday's low now. Reliance, so which is one of the biggest weight players in the index. ये कैसे ऊपर जाने नहीं देंगे ऊपर मार्केट को एकदम तब तो। या गौरव। या ओके राज भाई, एक दुविधा वाला क्वेश्चन है। somebody has entered 19,400 put again at 38, so he's asking कि क्या करूं, मैं होल्ड करूं कि क्या करें? सर एज ऑफ नो तो होल्ड करिए, बट एक काम करिए, आप 17 रुपए में 19,350 का पुट बेच दीजिए। ओके ओके 18 रुपए में चाहे वो इस वक्त आप प्लीज यू कैन सेल 19,350 पुट। सो या इंस्टेड ऑफ ट्रिगरिंग योर स्टॉप लॉस की इन केस मार्केट का मूव्स अ बिट हायर, क्योंकि हो सकता है वी आर विटनेसिंग वन वे डाउनफॉल फॉर लास्ट 45 मिनट्स, तो आप अगर 19,350 का पुट बेच देंगे तो उस एनी अपटिक में आपको वो पैसा 18 रुपए का तो आपका है ही, तो आपकी जो कॉस्टिंग होगी दैट विल बी जस्ट 20 रुपीज। Absolutely. So Viral, I think you would have got it. अगर you have entered second time, I know you have entered the first time as well. तो आप 350 का put बेच दीजिए, your costing will be there. You won't have the risk of losing a lot, so you can play it that way. Naresh sir, it is a pleasure. We want to guide each and every retail investors, and we do not charge money as well. It is a genuine effort from ICICI Direct, so that every retail investor is given proper advice on trading options, because option trading is very difficult, and we have started this and we want to continue this. This is just the beginning. We'll definitely come on for Nifty expiry as well. For now we're just focusing on the Thursday expiry. Okay, yes, Mona Murli sir, we'll definitely conduct some session on uh, technical analysis. We do have a session dedicated on every Saturday, options की बात ICICI Direct के साथ, which is hosted by me, and Dinesh Nagpal is our guest. So we do analyze stocks which look good for next week, or what is the, like, how will index play out next week. That is Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty, everything. So that's what we do. So chalo, let's move on to stocks now. Let's better get down to business. Reliance. Okay, Dinesh sir, any chart view on Reliance? We are having a lot of questions on Reliance, and then Bank Nifty. Yeah, just like I said, na, this is breaching the lows. Reliance सुबह से Yeah. शांत था. You look at this. ये सेकेंड जुलाई का लो, ये 24 जुलाई का लो, ये कल का लो, ये यहाँ से जाके 246070 एंड इट ब्रीच, ट्राइंग टू ब्रीच दैट. ये अगर ब्रीच कर जाता है ना लास्ट में तो और पैनिक डाल देगा मार्केट को इधर में एकदम. क्वाइट वो एकदम डेंजर में. सबसे बड़ा वेट प्लेयर है ये, एकदम खतरे में एकदम. Okay, so you feel Reliance may. So someone was asking about buying C in Reliance. So Dinesh sir is not positive there. There's not a recommendation that to buy anything. He's just saying he has a negative view there. Raj bhai, any recommendation on Reliance? If you have any, what is your thought on Reliance? See, Reliance, from the trading perspective, I would say avoid, considering almost 13% weight of Reliance in Nifty. So yes, from the index management point of view, Reliance may play its game, but अगर मैं बाकी data wise देखूं तो the way call writing is been there, I don't see that Reliance should recover much. And again, like the rest of the market, let's see. अगर हमें ओवरऑल देखना है मार्केट पिक्चर, तो हमें बैंक निफ्टी को देखने के लिए एचडीएफसी बैंक, और निफ्टी को देखने के लिए एचडीएफसी ग्रुप और रिलायंस, इन दो में हमारा व्यू बन जाए तो हम काफी हद तक मार्केट में व्यू बना सकते हैं. और आप अगर रिलायंस को देखो तो वो ऐसे मार्केट में, मतलब इट वाज द ओनली स्टॉक जिसने सबसे पहले प्रेशर देना चालू किया था इस मार्केट को. तो आई बिलीव जैसे दिनेश जी बोल रहे हैं कि काफी ऐसी जगह खड़ा है कि अगर इसने 2450 या 2460 के लेवल्स अगर तोड़े ना,
तो we might see stock coming down by another 5 to 7%. So वो अकेला निफ्टी को आपके 100-150 पॉइंट तो रिलायंस लेके आ सकता है, मैं बाकियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ. That's right. बात करते करते निफ्टी 19390 and I think Rajbhai 19450 put has crossed 80 and 19400 put has crossed 45. So Viral, I hope you're there and you're making money. You are printing some good serious money now in this expiry. I'm sorry, I remember only Viral's name that comes on top of my mind because he's there with us every expiry. So viewers, if you have made money, if you like this, please send us a shout out on your from your Twitter handle or any social handle. We would retweet it from our handle as well. So you can tag us, you can tag ICICI Direct. We are more than happy to send a retweet because that's just our motivation. So nothing else. So we okay. Hopefully everybody is trading with ICICI Direct. Yeah, we also trade with ICICI Direct. That's another thing. So yeah, so we are at 385. Reliance has gone down. Polycab, that's fun. Okay, Rajesh Khanvikar is asking. Okay, someone's asking, can we exit Reliance now? See, what is the position? Matlab, if Yeah, Gauri, what is the position in Reliance? Then we can definitely help you out. And what is his time frame? See, if it's an investment pick, don't get into trading. Both are entirely different. That's right. Man, राजभाई 3 गुना हो गया 450 ऑलमोस्ट. यार सही वक्त पे बिल्कुल. आज उस दिन हम लोग ने सही वक्त पे गलत वक्त पे बंद किया, आज उसी का ठीक उल्टा किया कि सही वक्त पे आज हमने स्टार्ट किया. अच्छा, एक there's a मैंने एक कमेंट देखा है. अभिषेक मुरारका इज आस्किंग स्मॉल कैप इंडेक्स के व्यू. So, Dinesh sir, can you take the chart check? Yeah, one sec. Yes. It's a very सुना सुना नाम लग रहा है यार, अभिषेक मुरारका. तो नहीं, कुछ लोग हैं जिनको मैं ब्लॉक कर देना चाहिए. Okay. I can't see it here. What I can see on my trading. It's a pleasure, Jeevan sir. Aradhya, we can't give you calls every moment. Right now we are riding 19450 put. यहाँ पे राज भाई ने सेल करने बोला. 19400 was suggested at 26. It is at 46 right now. You can ride this and keep a trail stop loss there. That's it. Nothing new, please. We won't give calls every minute. We cannot give calls every minute. That will be gambling, not trading. We are giving calls based on analysis, and it's not a gambling table. Yeah, Dinesh sir. Yeah. So if you look at the small cap index from the March lows, okay, it's done a 1.27% Fibonacci run. Okay, पूरा रन किया है, जहां थोड़ा सा आप वो 11,500 600 पर वॉबिल कर रहा है और पुल बैक, बिकॉज अगर लार्ज कैप्स में पुल बैक आ रही है तो स्मॉल कैप्स विल ऑलवेज बी कोलैटरल डैमेज इन द मार्केट. ये रूल रहता है मार्केट का. तो आज फिर भी परफॉर्म कर रहा है बिकॉज एक्सपायरी गेम है पूरा. This also could see a possible retracement till 11,300 odd. At least a 5-10% retracement looks on the cards even for the small cap index now from here. Yeah, as we speak, even I'm कोई अलग rush आ रहा है. Okay, लॉजिक होता है ना गौरव सी, क्योंकि 90% ट्रेडर्स आर यूजिंग लेवरेज. ओके, वो स्टॉक मार्जिन यूज करते हैं और ट्रेड करते हैं. इफ यू गो बाय द डेटा, लाइक आई सेड, 5 लाख प्लस पुट राइटर जिनका लॉस हुआ या जिनको मार्जिन प्रेशर आया, तो हाउ डू यू कन्वर्ट दैट मार्जिन? आज सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर डेबिट बैलेंस ना, तो कोलैटरल में माल बिकता है, तो द डैमेज कम्स टू स्मॉल कैप there. Yeah. So you have okay, to be careful. There is a question on from Saurabh Sultania. He's asking, is Nifty a positional short now? So I think we'll have to go to the weekly chart and see. And Rajbhai, you can chip in with your data. Yeah. So let Rajbhai say, then I will. Yeah, Rajbhai. सिर्फ ठीक है, अगर हम पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो लेट मी आंसर विद द पोजिशनल ओनली. फ्रॉम मार्च टिल नाउ वी हैवंट सीन even a 300 points decline. So for the first time after we made this recent high last week only, we have seen a decline of 400 points from the highs, and now it has even breached those levels. So yes, but what is your position? That depends. So for me, I would say 18,800 sort of level is the next major support for the market. Intermediate somewhere close to 19,200. But when it comes to positional things,
become dicey person to person. So I would say 18,800 is the major support for the market right now. Intermediate support might be seen at around 19,200, but overall things doesn't look quite positive right for Nifty at the current juncture. Okay, Dinesh sir, your chart Yeah. session, So, chart check on so this. if you remember on Saturday when we spoke that this was the first time Yeah. we were witnessing a lower high, okay, in the Yes. Nifty, this full rally. हुआ ही नहीं था कभी. So there was a confidence कि नहीं चल रहा है, तो that was a caution signal. Now we have a lower low also forming. और अगर आप consolidation देखो market में, this was one consolidation, this is the next consolidation, this is the third. Okay, so we are at the first consolidation now. When it comes to positional short, right now at this level, I will not look for a fresh, shorting. I would look for a short on bounce. And Okay. very simple. अगर हम, let's not go into too much technical. इसको अगर मैं simple line chart में convert कर देता हूँ, तो you get a fair idea कि कहाँ से गिरा है. यहाँ कोशिश कर करके. So this becomes a huge wall. 19,650, 700. So any bounce towards that could see some selling pressure for further breakdown. And I have a ditto target like Raj Bhai, 18,800. Absolute ditto. Yeah. Okay, so we have got, I think, Saurabh, it's the view on positional basis has been clear. I'll take some questions from the chat. Kindly advise on Bank Nifty for. Okay, Krishna Prasad, have you bought 44,300 put? So we had suggested, Raj Bhai had suggested that if it has become double, then you can exit it or you can ride it based on your comfort. So we will not, it won't be. Okay, what will, okay. Dinesh sir, what will be? Yes, Gauri, you have to exit Reliance because if both our experts have given bearish views. Recommendation from Raj is bear. He doesn't have any. We don't have any recommendation on Reliance, but it is about like not having a bullish view. So you have a bullish view, so we will not ask you to like. It's up to you now. Okay, we have different views. That's why. What will be the stop loss for Nifty short? That's what someone's asking. So this is for the Naresh sir. We are just talking about positional view. Then we'll take a stop loss based on positional view only. Dinesh sir, any positional stop loss on Nifty? Positional बहुत ऊपर है फिलहाल, बहुत ऊपर, नियर 19,600. So that's why I said ना, थोड़ा सा फ्रेश तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इस लेवल पे. और अगर ट्रेलिंग कोई कर रहा है तो 19,440. 19,440. Okay. Okay, I'll take some more questions. Short, if someone has shorted IEX at 118, Dinesh sir, what does IEX look on chart? खतरनाक स्टॉक है यार एकदम. IX 118. Yeah, someone has shorted When it went to 118. in futures. I don't know where. Someone has written, Aditya Singh has written, he has shorted IEX at 118 in futures. See, 118 स्पॉट 125 चल रहा है उसका spot. Then 118 is the low. It made in. Yeah, that was on 27. Yeah. 27 का वो low है. There you go. 9th of June, sir. In futures. Okay, probably somewhere around. Could you please, Aditya, can you say when did you buy this position and like which expiry are you holding? Then we will be able to give you a better view. Future खोल देता हूँ ना. Yeah. Gaurav, can we have a break after this for some time? Yeah, we can, absolutely. We have we have Salil and Sumit with us, so they usually explain we have ICICI has good in-house products as well, where you can trade on expiry day, which is about the flash trade, and it you can directly place orders by looking at the view. And जैसे अगर राज ने अगर view दिया रहेगा आपने वो flash trade के through किया होगा, it is our product which has the lowest brokerage in the industry. We only charge 7 rupees per order, so that is the best part. You pay low brokerage, you make profit on Raj Deepak's view, so you benefit in all ways with with trading with ICICI Direct. So yeah, Sumit and Salil, you guys can take it from here. We can resume our analysis from in 30, 45 minutes. So yeah, so Sumit, you want to take it first, or Salil, you want to go first? Yeah, thanks Gaurav for Ajay, you'll take it. Okay. yeah, okay, fine, not a problem.
I can clearly see that today's call has been great, and you know, I hope most of you would have already made money. And there are certain other ways to make money by using the tools that are available on our system. And I will showcase you some of the tools that are available with us. So just allow me a second, and I'll share my screen quickly, and then Gaurav, just let me know once you're able to see my screen. So Yes, I can see your yes, screen. great, Yes, great, yes. great, great. Thanks for that. So, as you rightly said, that we have a tool available here, like Flash Trade, where you can, you would have simply bought that ATM Bank Nifty option or the Nifty option, and you would have made certain points, you know, in a very short period of time, because the market shot up very quickly on the put side. So in that sense, when you enter the trade and when you exit the trade, you need to be very quick and swift in that case. So even now I can clearly see that the market is still in the same direction, but you can utilize this tool where you can decide your own contracts as well. By default, we have this most traded option, highest open interest option, ATM options, and current month futures available here. The best part is that this will you don't have to click on any other pages where you have to go and click on open position, place order, order book, and trade book, and so on and so forth. Everything is made available here only. So all you need to do is just click on buy call. The call will be bought. Let's say you wanted to go with Bank Nifty, and if you think this is the one that is really very cheaper, and you want to go a little bit one that is more expensive, so let's say 45, 44, 500, 500. सो 83 का प्राइस उसका चल रहा है. आपको टाइम सेट करना होगा कि आपको 10 मिनट के लिए रखना है, 15 मिनट के लिए रखना है, या 1 घंटे के लिए रखना है, सो ऑन सो फोर्थ. तो आप वो चीज़ यहाँ पर रख सकते हो. लेट्स से मैं 15 मिनट के लिए रखता हूँ. बैंक निफ्टी का क्वांटिटी काफ़ी लो हो गया है, and this is a good chance where you can increase the quantity here, and then you can trade the same quantity, let's say 100 quantity, in just 7 rupees. So buying 7 rupees, selling 7 rupees. उसके लिए आपको इसको रजिस्टर करना होगा. यहाँ पर आप मेन पेज पे आकर आप देखोगे यहाँ पर टिकर रन होता है, तो वहाँ पर 7 रुपीज पर ऑर्डर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपको रजिस्टर करना होगा. Once you register it, you can trade with 7 rupees per order on the buying side, and then 7 rupees per order on the selling side. तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल होगा, स्पेशली फॉर द स्कैल्पिंग, एंड दैट टू ऑन द एक्सपायरी डे. तो इट इज फैंटास्टिक. Now, recently this week we have launched another very easy to use tool in the basket order, I believe. जो लोग स्ट्रेटजीज करते हैं, अब जैसा राज भाई ने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपने पुट खरीद के रखा है एंड यू वांटेड टू लॉक योर प्रॉफिट्स, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके आपको सेल भी करना पड़ता है. तो वो चीज़ आप यहाँ से इमीडिएटली कर सकते हो, एंड व्हाइल एंटरिंग द द ट्रेड इटसेल्फ यू कैन डू द सेम. तो आपको क्या करना है, आपको बास्केट ऑर्डर पे जाना है. बास्केट ऑर्डर पे यहाँ पर हम लोगों ने क्विक स्टार्ट स्ट्रेटजीज वी हैव लॉन्च. तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक ऑन क्विक स्टार्ट. अब यहाँ पर आपका जो पुट का जो स्प्रेड था, राइट, आपने फुल पुट स्प्रेड बनाया था बेसिकली. तो आपने क्या किया था, 19 आपने यहाँ पे 19,400 आपने सेल किया था. तो अगर आपको 19,300 आपको उसके अगेंस्ट में बाय करना है, तो यू कैन डू दैट हियर सिंपली. आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना लीजिए, या फिर 350 को बाय कर लीजिए थोड़ा क्लोज. और अगर या फिर अगर आपने 19,500 को सेल किया हुआ है, तो आप लेट्स से 19,300 को ही आप प्रोटेक्शन के लिए ले लीजिए, सो दैट आप कर सकते हैं. मतलब जो भी आपका जो राज भाई ने जो रेकमेंड किया उस हिसाब से यू कैन डिसाइड अमंग योरसेल्व्स, एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पर अपना पे ऑफ भी देख सकते हो कि मैक्सिमम आपका पे ऑफ कितना बनने वाला है, मैक्सिमम लॉस आपको कितना होने वाला है. तो आपको सिर्फ यहाँ पर डन करना है. आप यहाँ पर मार्जिन भी देख पाओगे कि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना लगने वाला है, और आपके पास लिमिट कितना अवेलेबल है. तो आप सिर्फ इसको डन कर दीजिए. आप कुछ तो आप इसका बास्केट का नाम दे दीजिए.
आप यहाँ पर आके मार्जिन देख लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन अवेलेबल है तो आप उसको इंक्लूड में कर दीजिए। हो सकता है कि आपके पास कोई पोजीशन हो तो आपका मार्जिन और ड्रॉप हो जाए। अगर आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आके आप ऑर्डर प्लेस कीजिए एंड आपका ऑर्डर चला जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हमने रिसेंटली लॉन्च किया है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल दी यूजर्स। दिस screen will help you, create your strategy immediately, especially during these kind of market conditions जहाँ पे movement is really very quick। तो एक एक स्टॉक को बनाने में काफी टाइम लगता है, तो आप यहाँ पर आके बना सकते हैं इमीडिएटली आके। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द टाइल दैट यू वांट। आप बनाइए अपने हिसाब से, आप उसका मार्जिन देख लीजिए, बास्केट बनाइए एंड देन आप कर सकते हो इमीडिएटली। आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी का प्राइस अभी फिलहाल 19360 के अराउंड चल रहा है। सो यू कैन क्रिएट दैट। सेम चीज अगर आपको करनी है फ्रॉम द स्ट्रेटेजी बिल्डर ऑल्सो यू कैन डू इट। स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपको पूरा ऑप्शन चेन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको प्राइसेस भी दिखाई देंगे कि 400 का 450 का प्राइस रफली अराउंड अभी चल रहा है, 107 रुपया हो गया है। लेट्स से पुट राइट बाई करने को बोला गया था, तो अगर आपको पुट बाई करना है उसके अगेंस्ट में आपको कुछ दूसरा कुछ सेल करना है, लेट्स से 350, अब वो भी यहाँ से भी कर सकते हो। आप इसको यहाँ पर एनालाइज कीजिए। आपको देखना है कि अगर मेरा प्राइस इतना ड्रॉप होगा तो कितना जाएगा, कैसे जाएगा। यहाँ पर आप डेल्टा, गामा, आपका थीटा, वेगा एंड ऑल दीज ग्रीक्स यू कैन ऑल्सो सी हियर, राइट। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर 1300 रुपया होने वाला है, आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 3600 का है फॉर द हाइपोथेटिकल सिनेरियो दैट आई क्रिएटेड। आप इसको सेव भी कर सकते हो बास्केट के अंदर। आप यहाँ पर सेव करो, आपका ये स्ट्रेटेजी बन जाएगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप यहाँ से सिंपली गो विद द ट्रेड। अगर आपको इसको स्ट्रेटेजी को एडिट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन एडिट। यहाँ पर आप जाके क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो, जो क्वांटिटीज आपको चाहिए। बाय का सेल, सेल का बाय करना है, देन यू कैन आल्सो डू दैट। डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। आप एनालाइज कीजिए, ऐड टू बास्केट, बास्केट में आइए, आप अपना मार्जिन देखिए और इसको ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। वेरी सिंपल, कुछ ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्लिक 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 एंड डन। So these are the two good features, especially on the ICICI Direct platform for expiry days, where you have very limited amount of time to react, limited amount of time to enter the stuff. तो आप यहाँ पर आके आप अपना टाइम बचा के आप वेरी क्विकली यू कैन क्रिएट योर स्ट्रैटेजीज, अंडरस्टैंड द पे ऑफ एंड देन प्लेस द ऑर्डर। कुछ लोग को चार्ट्स देखने के लिए पसंद है, तो हमारे पास यहाँ पर एप्रो में आप आके यहाँ पर वॉच लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। वॉच लिस्ट में आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका चार्ट कैसे चल रहा है लाइव मार्केट में। नाउ यू कैन सी दिस 19350 के अराउंड मार्केट इज होवरिंग अराउंड विद द निफ्टी। मेरा 1 आवर का चार्ट है। इफ यू वांट टू गो विद 5 मिनट चार्ट, वाह, 5 मिनट चार्ट में यू कैन क्लियरली सी वन शॉट में नीचे की तरफ जा रहा है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है एंड ऑल, तो यहाँ पर एक बेसिक हाइकनाशी का भी एक टूल है, बहुत लोग प्रेफर करते हैं, जो कि आपको बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है। तो हाइकनाशी को मैंने कन्वर्ट किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा रेड 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 में दिखाई दे रहा है। तो इट इज़ क्लियर कि मार्केट इज एक्चुअली इन बेरिश मोड फुल्ली एंड कोई साइन भी नहीं दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा रिकवरी होगा एज ऑफ नाउ। नहीं तो अगर कुछ रिकवरी का पॉइंट होगा तो इट विल लुक लाइक समथिंग हियर, इसके जैसा। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल्स बन जाएगा हाइकनाशी के अंदर एंड देन यू कैन टेक योर बेट अकॉर्डिंगली, वेदर यू वांट टू गो बुलिश ऑन द कॉल साइड और वेदर यू वांट टू शॉर्ट पुट और समथिंग लाइक दैट। आई मीन यू कैन डिसाइड अमंग योरसेल्फ ऑन योर ओन। बट यहाँ पर ये कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसके हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हो। हमारे पास रेनको चार्ट्स भी है, रेनको चार्ट्स भी सेम चीज़ बोलते हैं। इनको चार्ट्स में भी आप ये सब चीज़ देख सकते हो। यहाँ पे अभी कोई रिवर्सल का कोई ऐसा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है जैसा मैंने बताया, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मल कैंडल पे ही आऊँगा। लेट्स से मैं 15 मिनट का कैंडल लगाता हूँ। 15 मिनट के कैंडल में आई कैन सी द मार्केट इज गोइंग डाउन 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 डाउन। अब इसने ये लेवल को भी तोड़ दिया बेसिकली। तो
बहुत लोग होते हैं उनको फिबोनाची लेवल्स पता करना होता है, तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आके फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आपको क्लिक करना है। आप नॉर्मली हाई से लो पर जाते हो, ये अभी इसका लो है। इन केस अगर कोई रिट्रेसमेंट, मतलब दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल आई एम क्रिएटिंग, अगर आपको देखना है तो अगर हाइपोथेटिकल यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक भी आता है तो हो सकता है कि यहाँ तक बाउंस बैक आ जाए विच इज 38.2%, which is roughly around 19,530 or maybe somewhere around this number. 50% अगर है तो 50% के लिए it comes around 19,576. अगर in case अगर bounce back आया तो overall direction तो we can see that it is going down. But अगर bounce back थोड़ा बहुत आया because it is expiry and just like yesterday, यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क इश्यूज. ओके, नो प्रॉब्लम. राज भाई, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ. 19450 is with saw a high of more than and we are seeing a first green candle on 15 minutes time frame, but obviously it still has 7.5 minutes to go. But yeah, after at least after 1.5 hours, and we are seeing a positive candle here. So now what becomes, because 350 आपने बेचने बोला था, you asked to sell 350 to make a put spread, and we made a low of 19,345. So what is your view now on this? See, my target was somewhere close to 350 only. Yeah. Okay. Now it has been tested at just middle of the session. So I will wait. And again, the view which I have communicated that market players are looking for the recovery. Now, even if recovery comes, they will not be able to make any money. That's right. And overall, in the last 1 hour, you will see it wasn't the bank nifty, but it was the banking or the other heavyweight which has put pressure on the market. So I think we are moving towards 44,600 sort of level, and perhaps in bank nifty or even a bit more than that. But as of now, it's just one candle. I don't want to get into that because of this one candle. In case we get somewhere close to 400, that might be, we will look at that point of time, because for the day the target has been achieved. Okay. Now So somewhere to 400 we should look at कि हाँ वहाँ पे कैसा pan out हो रहा है. It's a dead cat bounce, which you can say from the oversold region from the intraday perspective. But no, things haven't changed much. okay, Viral, I'm again saying please do not overtrade. This is where a lot of retail investors lose money. You had entered 400 at 38. It would have given you more money. Why did you want to go into Bank Nifty? Again saying, making, like, taking extra trade will not make you money. It is about, if you have booked to a profit, get out of the market. You don't have to again and again trade. Rajbhai, somebody is asking, can we hold on to 19450 put? So that went from 30 to 110. Now it is trading somewhere near 105. So I think it is again almost 4x. मतलब अगर आप देखें तो इतना, we do not get 4x return so easily. So what would be your suggestion? Because 350 का put बेच के भी हो गया है, मतलब आप देखो, बता अभी दीजिए. अगर अगर किसी को अपना प्रॉफिट लॉक करना है तो ठीक है, मैं मानता हूं कि उनके पैसा डबल लगेगा, तो 350 का कॉल बाई कर ले. अगर उन्होंने उनका पैसा 3 गुना 4 गुना हो गया है तो उनसे बोलिए कि 350 का कॉल बाई कर लें. Okay. और अगर उन्होंने 350 का कॉल बाई कर लिया तो उनका पूरा का पैसा लॉक हो गया, और इन केस मार्केट में फर्दर डिक्लाइन आती है तो ही विल मेक मनी मोर, ही विल मेक Yeah, मोर मनी. that's right. So So it's more of a management which we should know how to trade, and once you have made your money, so how to just able to hold that money with ourselves. Yeah. क्योंकि अगर मार्केट में 100 पॉइंट का बाउंस आ गया तो आपकी पूरी की पूरी पूरा का पूरा पैसा भी चला जाएगा. yeah. Gaurav Joshi, 19350 we are not suggesting. We are suggesting it to sell. So 19450 का put buy किया था, and 19350 का put we are trying to sell. That is a put spread, and you do not lose out on the money. That is what we have said. That Rajbhai was trying to say. And viewers, please, we as a broker, हमारे लिए तो it is really good for us if you guys trade a lot. But we are again saying please do not overtrade, because
it is not about we generating brokerage. It is about you making money and you not losing money. That is more important. So please do not overtrade. This is something from the broker which is telling you, please do not overtrade. So please just listen to this advice. Overtrading will lead to losses and giving us profit. We are here so that you guys make profit and do not lose money unnecessarily. So please stay away from overtrading. That's the only advice we can give as ICICI Direct here. So Rajbhai, any other? Okay, there is a question on Dixon. Someone is asking view on Dixon. So can you just say if you have any view on Dixon here, and then we can take the chart check from Dinesh sir. Just hold on, let me check. I'm not sure about the result whether they have come or not. But right now it is looking quite good, and not just Dixon, but the rest of these stocks like Voltas or even Havels. So not exactly Havels, but Voltas and Dixon. So yeah, one can look into it. थोड़ा सा मार्केट स्टेबलिश हो जाएगा तो अच्छा और लगेगा. But we had given a strategy in Voltas somewhere close to 770 for the full call spread for the target of 830. And I would say कि Dixon को yes, it is fine till it is above. आज का जो कैंडल है it is somehow very good. तो 4000 के ऊपर का जब तक है one should remain positive here. It might retest or even surpass this June month high somewhere close to 4650. Kiran Gadke, we cannot advise on KSP. You are in a tremendous profit. 84% is an absolutely kick-ass profit, but we cannot advise on that. We can definitely definitely see Britannia. Rajbhai is asking Britannia, can he average Britannia this time? ना सी मार्केट में एवरेजिंग तब करनी चाहिए व्हेन यू हैव सम कंफर्ट विद द दैट स्टॉक हैज स्टेबलाइज्ड और समथिंग इट माइट कम टू 45 आल्सो but I would suggest if you want to average then average only beyond 5000 levels. Please don't average at current prices. Okay, that's there. I'll take few more questions from the okay. Tata Power future. I think Tata Power had been the star of this week. Went all the way till 244 in spot. I don't know the future price, but it was one of the star of the moment. I think Dinesh sir, Tata Power, you are tracking it very closely, so I'll take your chart view on this. What does your chart say? Yeah, Tata Power was very strong. Saturday को मैंने बताया भी था 2 Saturdays back. And it's done superbly well. और अब थोड़ा सा एक वॉल के पास घुस गया है वो. This level of 240 to 246 is not that easy. थोड़ा consolidation करेगा, इधर उधर घूमेगा. सपोर्ट काफी नीचे है, नियर 230. इसमें इतना बड़ा सॉलिड 2 ग्रीन कैंडल बने हैं ना, तो पुल बैक बनता है. और ओवरऑल इफ यू गो टू सी ना, दी लास्ट 2 दिन का जो ट्रेंड हो रहा है मार्केट में, लार्ज कैप बैशिंग, नॉन वेट स्टॉक्स ब्रेकिंग आउट. सो यू स्पोक अबाउट डिक्सन, IRCTC, स्टॉक्स जिसमें वेटेज ही नहीं है इंडेक्स का, जिसमें मतलब कोई इंपैक्ट नहीं आता और वो अपने ही रंग में चलते हैं, अपना ही चाल है उनका. सो दैट इज द केस. एंड इवन डिक्सन इज लाइक दैट. इट्स सेटिंग अप नाइसली. वेट नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं होता है, बिकॉज 90% ट्रेडर जो होता है ट्राइज टू बी विद द मेन इंडेक्स ट्रेंड विच इज निफ्टी, राइट. जब कॉन्ट्रा टू ट्रेंड कुछ आता है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट होता है. तो ओवरऑल वी विल हैव ऑफशूट्स हियर एंड देयर, तो वही चलेगा. अभी फिलहाल तो पुल बैक होने दो कंप्लीट टाटा पावर का, फिर देखते हैं उसको वापस. Okay. Dinesh sir, there is one more stock that you track closely uske upar hai. So I'm asking you on Petronet. So I remember I had a discussion with you off the record, like off camera. Yeah. So last Saturday we did Petronet. Yes. काम हो गया उसका Petronet का, और अब Petronet वापस पुल बैक में घुस गया. वापस पुल बैक में है. Overall structure wise, if you look at the monthly structure, it's phenomenally, बहुत बड़ा एक साइडवेज ट्रेंड से री एमर्ज करने की कोशिश कर रहा है. आई वांट टू सी इट होल्ड
220. 220 अगर होल्ड नहीं करेगा तो अगेन इट विल गो इनटू अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ स्लम्प, नहीं तो Okay. कंसोलिडेशन में घुस गया ये भी वापस. Okay. Okay. Raj bhai, any view on Bajaj Finance? We're getting a question on Bajaj Finance. Then we can take To- Dinesh sir's chart view as well, and think what does his Today, chart say? today in the morning itself, we had given a bearish strategy in the stock. Okay. We have shorted future and sold also 6800 put because the stock has because of this high volatile nature आपके options premium काफी अच्छे रहते हैं, तो we have sold future here. I think we have already more than 1.5% down, so yes, it's still negative for us. Okay. Perhaps it is moving towards 6800 of our target. Okay. Also, I'll say Raj is very you will have a regular recommendation from Raj Deepak on our ICICI's one-click derivative. This is a product one-click derivative that is ICICI Direct's flagship product. Raj and his team do share regular views of derivative options, futures there. So if you want to have his view regular on daily basis, you can definitely go to one-click derivative, and from there you can trade. So that is ICICI's platform, and another platform we have is iClick to gain. So there also you have derivative view, currency view, commodity view, and Raj and his team is very active there. So you can see his derivative recommendation there, and also he's also active on Twitter. So you can follow him on Twitter as well and ask your questions to him there as well. So yeah, Raj is these days available at different platforms. So yes. राजा बिकॉज आई गॉट वन ट्वीट सेइंग दैट कि ये रोज क्यों नहीं कर सकते, तो रोज के लिए तो वन क्लिक डेरिवेटिव बेटर होगा आपको आपके व्यूज देखने के लिए. ये बात सही होगी? I think he's gone. He's here. He's gone. Sorry Gaurav, can you repeat it again? मैंने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि ये रोज क्यों नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि रोज तो नहीं हो पाएगा, बट आप वन क्लिक डेरिवेटिव में जाके देख सकते हैं. तो आपके व्यूज वन क्लिक डेरिवेटिव में रहेंगे, तो आप बता सकते हैं वन क्लिक डेरिवेटिव के बारे में प्लीज. देखिए, as a research team, we should be more into research than doing our promotions things. So, if you want to enjoy our research, unbiased view, please log in into ICICI Direct and visit our one-click derivatives page. So, all the research recommendations you can see over there, and also in through iClick to gain. But in iClick to gain, positions are jumbled up, recommendations are jumbled up because you will get currency, commodity, equity margins, and the derivatives. But if you just want to look into the derivatives recommendations, one-click derivatives you can see in the front page is under the smart tools. So one-click derivatives is there, and you can trade with just one click. So if we are giving any strategy, mostly we focus on the strategies, not just the short-term momentum. So like current, just in the morning, we had given short recommendation in Bajaj Auto as well as in the Bajaj Finance, and both are working fine as of now. We have a strike rate of somewhere close to 70%. We don't claim that we are 100% right. So whatever is there, you will have the MIS, everything that is in place in one-click derivatives. And we are continuously working for the better presentation, better user experience. So yes, give us some time. It will be much better with the passage of time. Yes, guys, you can set alert notifications. You can switch on the notification whenever there is a call put on by the derivative team. You will get a notification on the ICICI app that is there. Raj Deepak's Twitter handle is already shared by me. His Twitter handle is Raj D Singh 1. You can go and follow him on Twitter, and you can. Mohit, we'll definitely show the OI chart. Just give us a few moments, because as we speak, Nifty has made a fresh low. Rajbhai, I think it has made a fresh low. Yes, it is a day's low again. So तो आपने तो बहुत बुरा कर दिया निफ्टी का आज. ठीक है, व्यू. बुरा नहीं, देखिए, law of average applies everywhere. Okay, so Yeah. the way we have moved up at some point of time, you even thought that okay, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया. You were looking out for some correction in the market, and when it is coming now, you are saying कि अब ज्यादा हो गया. So, so it's both way street. See what happened that after the expiry, July expiry, we haven't seen FIs follow buying. So in the lack of buying support from the FIs, it was bound to happen. Yes.
along with that थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ी सी न्यूज आ गई, बट सी आपने मार्च महीने में you were somewhere close to 17,000, by the July end you were somewhere close to 20,000, so that was a huge move. So That's right. yeah, so it is just a marginal correction and it is a healthy correction. That's So right. जिसको जो स्टॉक अच्छे लगते हों, जो उनको मिस हुए हैं, जिनके जो स्टॉक्स, सो दे विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी वंस अगेन. क्या होता है कि आदमी चढ़ के खरीदता है, तो मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस. एक एनआईएसएम का जिन्होंने भी मॉड्यूल दिया होगा या पढ़ा होगा, एक होता है रिसेंसी इफेक्ट, कि आपको इमीडिएट बेसिस पर याद रहता है मार्केट का, बट अगर आप 3 महीने पहले का आप भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा उस रिसेंसी बायस से अगर हम लोग बाहर आएंगे, तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है मार्केट में. सो अच्छा भाई, एक चीज, एक क्वेश्चन आ रहा है हमें चैट में. निफ्टी इज नाउ एट 19,339, ठीक है, तो दे आर आस्किंग 350 पुट. डू यू सी मेकिंग, डज इट मेक सेंस बाइंग 19,350 पुट, इज द क्वेश्चन इन द चैट. बट वो 43. yes, you can buy. See, again, my bias hasn't changed. It's still negative. The problem is whether you will be able to afford this. मतलब आपने एक बार 450 का पुट देखा 30 रुपए में, आपने 500 का पुट देखा 52 रुपए में, तो क्या आप 350 का पुट 42 रुपए में खरीद पाएंगे? So that is the whole question. How we have gone right so far, it doesn't mean we will not go wrong in future. So as of now, my view has remained intact. I am still negative. I don't see market recovery. But आप अगर ऊपर से देखेंगे तो हम लोग 550 फ्यूचर से 400 के आसपास आ गए हैं, तो वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट बाय 200 पॉइंट्स. तो स्पॉट में हमें दिखा रहा है कल की क्लोजिंग से हम लोग डाउन है, और जब से हमने सेशन स्टार्ट किया तब से हम लोग 150 पॉइंट्स डाउन है. तो यहाँ पर अगर छोटी सी भी रिकवरी होती है, तो आपका ऑप्शन का प्राइस बहुत तेजी से कम होगा. तो इफ यू हैव मेड मनी, मैंने तब भी बोला था कि आप उसको बुक करो, नीचे की स्ट्राइक में आप जो है खरीद लो, दैट विल मेक मोर सेंस. एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, इफ यू हैव मेड मनी देयर, बुक, डिप्लॉय योर प्रॉफिट एट एटीएम पुट्स. ओके, तो एटीएम पुट राइट नाउ इज 350. या राज भाई, एक व्यूअर क्वेश्चन है, इज आस्किंग कि वन क्लिक डेरिवेटिव अगर मुझे देखना है आईसीआईसीआई के प्लेटफॉर्म पे, तो कैसे देख सकते हैं? तो कैन यू, आपको अगर उसका पाथ अगर आप शेयर कर पाए. जस्ट होल्ड ऑन करो, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. या Is it my screen is visible now? yes, it is visible, but I can see my face. Okay, so see, you need to just go to the F&O section in ICICI Direct website, and I believe in your page, somewhere close to here, you should see one-click derivatives, because we are in the CUG group. So this is something which you will find in your website a couple of days after. But it has been named as a smart tools, and under smart tools we have flash trade, execution LDOs, as well as one-click F&O. So for you, for the rest of the guys, somewhere close to here only, where the smart tool is placed, one-click F&O, you can see. Once you just to add, Raj. Yeah, Sumit is here. I think Sumit would be in a better position to. Yeah, Sumit, can you share your screen? This has actually gone. So Raj, yes, this has actually gone live. So users will be able to see that smart tools by themselves, and they just need to click on one click F&O on that. Yes. So in here we have this recommended one click जो हमने आज दी हैं. तो अगर आप देख सकते हैं, जो मैं बोल रहा था कि कवर्ड पुट हम लोगों ने बजाज इसका दे रखा था. Our recommended price was 7,200 to 7,240, and we have sold 6,800 put at 50 rupees. So that 7,200, वहाँ पे हमें we are making more than 100 points over there. In put we are losing somewhere close to 30 rupees, but net we are making 70 points in Bajaj Finance. And similarly, we had given multiple strategies in the bank. We have sold call options in Bank Nifty. So we have sold call option of 45,100 in the morning. So from the morning itself, our view was negative. And right now, everything is almost achieved, target achieved. See,
most of the things. Book profit in Ambuja Cement, in short Nifty, even we had given 1030 long put. So yes. See, I'm not quite good in giving explanation of the product. I think Sumit would be the better person. But yes, any strategies which has been given by research, people can look into in recommended one click. Okay, so viewers, I think it is very clear now that Raj ke recommendation, if you want to see recommendation from Raj and his team of analysts, you can come to ICICI Direct's platform, and there is a option of smart tools. There is one click FNO. You can go on one click FNO and see the recommendation. And as we speak, Raj had asked you all ki you can look at ATM put of 19350 to buy. I think that was somewhere near 42 when we were speaking, Rajbhai. It is at 44 right now. So it is somewhere near a buying price. 19400 has gone from 26 to 80, and 450 has gone from 30 to only 125. It was 32 or 35, if I'm not wrong. 19350 put. 19350 put was 42. Okay, it's still at 42. Yeah, it is still at 42. It is at cost. So people are asking, can we enter this, or should we not? So what is As your of view now, on? yes. As of now, yes, people can enter here. As of now, yes. And any stop loss for this put, because now we are reaching the Now fag we end. will, yes. Now we should have a stop loss. And Yeah. अगेन मुझे स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा तो 19300 का पुट इज अवेलेबल एट 20 रुपीज. व्हाई कांट वी सेल दैट? Yes, that's right. So people who want to enter 19350 put, please sell 19300 put as well. It is not a naked recommendation from Rajdeepak. It is a put spread, that is buy 19350 put and sell 19300 put, which is available at 20 rupees and 42 pe hai. So your total costing becomes 22. Your risk per lot is only 1100. Is that right, Rajbhai? यस यस. Yeah. So Raj bhai, आप जो FII के बारे में बोल रहे थे, even I wanted to add something there कि FII की जो total futures OI थी, जो 1,07,000 या 1,04,000 क्वांटिटी पे थी, वो नेगेटिव हो चुकी है ऑलमोस्ट. सो वी हैव सीन फ्यूचर्स ओआई ऑलमोस्ट डिमिनिशिंग completely, and from past 10 days FIs have come in a selling spree in cash as well as future. So नहीं, I कैश think that नहीं है. अगर आप फाइनल डेटा देखोगे तो कैश में उनकी इस तरीके की सेलिंग नहीं है. मतलब अगर देखिए, कल का डेटा तो आया नहीं, परसों जो हम लोगों ने एनएससी में देखा था, दैट वाज समवेयर क्लोज टू 9200, सॉरी 92 करोड़ सेल ओनली, राइट? But end of the data or the final data comes out to be positive. It was again flat, but a marginal in green. So I won't say that they were selling. It was more of a liquidation which happened from in the future segment, and that might be the reason why we are witnessing pressure only among index heavyweights. Your broader market that hasn't done that well, bad. So yes, what we have seen is more of a liquidation. अभी तक shorts नहीं बने हैं. एक बार शॉर्ट्स बनना स्टार्ट होता है, देन परहैप्स वी माइट लुक एट कि हाँ अब नेगेटिविटी आ रही है. तो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग इन लॉन्ग पोजीशंस व्हिच वर देयर कि 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट थे उनके आपके मिड ऑफ जुलाई में, वो जो है जस्ट टर्न नेगेटिव. तो या वहां पर उन्होंने जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कम की है. शॉर्ट पोजीशंस क्या एक्स्ट्रा एडिशनली ऐड हुई है? तो द आंसर इज नो. ओके, गॉट इट. राज भाई, एक बार ओआई चेक ले लें हम लोग. पुट साइड जैसे 19400 पे 1.5 करोड़ थे, अब वो 70 lakhs हो गए, बट स्टिल 70 lakhs इज अ कंसिडरेबल ओआई, एंड एट 19350 वी हैव 84 lakhs. तो प्रेशर अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, एंड देयर इज स्टिल प्रेशर एट 19350 पुट नाउ, बिकॉज 85 लाख क्वांटिटी इज आल्सो कंसिडरेबल ओआई, एंड 300 पे 1.5 करोड़ है अभी. And बात करते करते कॉल साइड वी आर सीइंग मैसिव एडिशन. 19400 has almost 2 crore and 19350 is seeing 88 lakhs and 86 lakhs तो आज ही ऐड हुए हैं. So this is indicating, this is not indicating good signal for bulls. मतलब there is no sign of Yes. respite. Yes, there is no sign of respite as of now. और अगर इन केस कोई रिस्पाइट के बारे में हम लोग बात करते भी है ना, तो दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई थिंक 130 का जो अभी का जो रिसेंट हमने जो इन लास्ट 15-20 मिनट्स में जो कंसोलिडेशन देखा है, तो उसके बाद क्या हो सकता है कि लोगों ने दोबारा से पुट राइट करने की कोशिश की हो. Right.
राइट? तो Yeah. एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर विटनेसिंग की ह्यूज कॉल राइटिंग। अगर मैं पिछले 15 मिनट आधे घंटे का भी देख रहा हूँ डेटा, तो 19400 कॉल में तो बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। आपके करीब 65-66 हजार कॉन्ट्रैक्ट यानी 33 लाख शेयर, 33 lakh shares have been added at 19400 strike in just last half an hour. And not just that, even 19350 call has seen addition. Yes. तो मतलब okay, I was wrong. It is 3,88,000, not your 38,000. So 2 crore shares were added in last half an hour, Yeah. and almost 88 lakh shares at 19,350 put and sorry, call. Call. Yes. So what I believe, until unless we don't see closure here, uh, no, people are just running away. People are just running away. They are, if you can see, the uh, closure among put options is quite huge, and they are stuck. They are stuck. Yeah. So हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में आई एम लुकिंग एट रिकवरी, स्टिल आई डोंट सी मच रिकवरी। क्या है कि एक तरीके से मार्केट देता आ रहा है, बीच में आपने हाफ एन आवर का समहाउ कंसोलिडेशन देख लिया, बट परहैप्स 19300 is the next level which we should target. Yeah, looks like because we've seen mass since 10 o'clock. अगर आप देखेंगे since 10:15, even I am opening my data. I can share my screen because I'm using. Exactly. Yeah, I cannot. But if you see data from 10:15, 400 put has seen almost 1 crore unwinding on put side. 19,450 has seen almost 1 crore, and 19,500 also more than 1 crore. And we have seen addition of more than 1.5 crore on 19,400 and approximately 82 lakhs on 19,350. So right now अगर आप देखेंगे तो move अगर short covering अगर इनको end में if there has to be any short covering or something, any respite, it will only come above 19,400 level. Until 19,400 it's a sell on rise market given the derivative data, Rajbhai, if I'm right, if I'm reading it right. Yeah, so far, see, there isn't any recovery, right? So even to close, so if you want to close your call options, you need to find some recovery. कम से कम 50 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स की तो रिकवरी आनी चाहिए जब व्हेन यू हैव सीन अ फॉल ऑफ 200 पॉइंट्स। तो उसके बाद एज एन राइटर यू विल बी अंडर थ्रेट। एज ऑफ नाउ देयर इजंट एनी थ्रेट। तो ओनली बियॉन्ड सम सर्टेन लेवल एज यू हैव मेंशनड समवेयर क्लोज टू 19400, वो निकलता है, देन ओनली वन शुड लुक एट द बाइंग, अदरवाइज नो। As we speak, 19,400 is almost added 2 crore. Matlab 2 crore is the overall OI there. So I don't think so it is. And 19,350 has added 90 lakh. Matlab 92 is the total OI at that strike on call side. And 91 lakhs approximately has been added today. So this also is not good sign. बट राज भाई एक डेविल्स एडवोकेट मैं यहाँ पे बन रहा हूँ कि यूजुअली क्या होता है ना कि जैसे जैसे मोमेंटम जिस साइड जाता है तो पीपल कम एंड राइट देयर, और यहाँ पे जैसे फ्रेश एक्सपायरी डे पे 90 मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ हुआ है राइट करना एट 1:30 PM। इवन इफ देयर इज अ मूव ऑन अबाउट 19,350 वी कैन, ये लोग भागने सबसे पहले कवर करने आएंगे, सो दैट कैन जनरेट सम मोमेंटम राइट। इफ आई हैव टू जस्ट मैं उल्टे साइड पे अगर आपका लेके जाऊं ध्यान तो। हाँ, मैं उसको और भी उल्टा करना चाहता हूँ कि व्हाई समवन इज राइटिंग कॉल्स, because they are either making huge losses in puts, so they don't want to carry forward their put, or they don't want to go away कि अभी मैंने 19,500 का पुट राइट किया है तो चलो मैं 19,400 का पुट राइट करूं, राइट? You don't want to do that when the market is declined by 200 points। तो आप अपनी पुट की पोजीशन काट के जो आपका लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए you have started writing calls, और आपकी पुट्स की पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है, कोई बहुत ज्यादा भागी नहीं है, मतलब उनको तो डेसिमेशन हो चुका है जो आईटीएम थे, बट अगेन आपके 19350 19300 जहां पे मौका मिला है लोगों का वही खड़ा हुआ है। तो दैट्स वेयर इट कम्स कि क्यों नहीं ये वो दिन हो सकता है कि हाँ लास्ट के हाफ एन आवर कुड बी फर्दर पेनफुल फॉर देम, क्योंकि लोगों ने कॉल राइट किया है, आप अगेंस्ट ये सोच रहे हो कि दे हैव gone with the trend, and that's why this OI has come up, but at the same time there are many people who might be looking at कि हाँ यार इतना गिर गया है, रोज मुझे 130 या 230 पे रिकवरी मिलती है, why it couldn't be today? तो मैं उसको थोड़ा सा उल्टे डायरेक्शन में लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अभी तक ऐसा कोई सिग्नल नहीं आ रहा मेरे पास ना डेटा से। आप आईवी देखिए ना किस तरह से शूट अप हुई है कल और आज में, यू आर अप्रोक्सीमेटली 12। Yeah.
Absolutely, that is a massive rise, 20% rise almost. Dinesh sir, any what is Ichimoku suggesting? Any support or anything from your end? 19,300 के पास कोई है. इचिमोकू इज सजेस्टिंग कि एक्सट्रीमली इन द वेरी शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है इन द एकदम शॉर्ट टर्म में. तो या देर इज एक्चुअली इफ यू सी देर इज अ गैप अप विच हैपेंड ऑन 3rd of July. ओके, वो गैप अप एरिया इज 19,050, बहुत 19,240-50 है. सो अगर ये कंटिन्यूस डिक्लाइन किए जा रहा है तो दैट्स द एरिया वेयर आई विल बी लुकिंग फॉर अ पॉज इन द फॉल. दैट्स द एरिया. तब तक अभी तो लाइक आई सेड 19,430 वो अभी भी वही है ट्रेल का. इमेजिन Okay. मूवमेंट ही नहीं हो रही है उधर से कोई ट्रेल. ओके, तो बेसिकली 19 एनी पॉजिटिव, अगर आपको पॉजिटिव साइड पे रहना है तो इट इज अबाउट 19400 ओनली गिवन द डेटा एंड योर इचिमोकू. सो फॉर नाउ बायस अगेन रिमेन सेल ऑन राइज विद अ स्टॉप लॉस नियर 19430. दैट्स राइट राज भाई, 430 425 आपके हिसाब से? स्पॉट लेवल पे मतलब वो बहुत दूर हो जाएगा. इंट्राडे ट्रेड उसकी बेसिस पे पॉसिबल नहीं है. या तो आई वुड से कि परहैप्स समवेयर क्लोज टू 370. ओके. Well, see, now it's just more of a hope which I'm talking about. My view has panned out. I don't want to get into further कि मैं इसमें राज भाई जबरदस्ती. एक सेकंड में आपको रोक रहा हूँ. विरल 19350 put was asked only to buy as a put spread, not a naked put. It was asked by Raj Bhai, buy near 42 and to sell 19300 put at 22 rupees. Total costing was around 22 and that was the suggestion given by him. Please, we have clearly said 19350 if you're entering, enter with a put spread, do not buy a naked put. It was clearly said by us. So please listen to it. And again, I'm saying, please do not overtrade. You will lose money. हाँ राज भाई. तो मतलब मेरे लिए एक होप ट्रेड है जिसमें पूरा मार्केट इस वक्त लगा हुआ है कि हाँ इतना गिर चुका है, एक रिकवरी आएगी 130 के बाद. तो शायद 370 के ऊपर अगर हम लोग स्पॉट लेवल पे सस्टेन करते हैं देन माइट बी वी मे मूव टुवर्ड्स 420. बट कल का जो लो था दैट वाज 420 425, तो उसके ऊपर जाना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मेरे को. ठीक है. सो मैं कुछ कुछ स्टॉक्स जो लार्ज कैप है आज जिसने फॉल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है राज भाई. सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर निफ्टी 50 में रहा है ICICI Bank, which I'm sorry, we cannot take any view on ICICI Bank because it's a parent, so I'll ignore that. Second is Reliance, third is TCS. तो राज भाई TCS के ऊपर आपका क्या व्यू बन रहा है? Any suggestion on TCS? TCS, see the entire IT pack, people have different opinion here that it has already made the double bottom or something. I am more into that stock shouldn't perform. It hasn't performed in line with the market. Only in the last leg it has seen some good buying. That too after the weak results also. So I don't see much upside. I see more of a consolidation considering it's a big heavyweight for the index. So if someone buy for the investment, even I'm not in favor of that. It may continue to consolidate for an even longer period of time. So for me, the broader range for the stock somewhere close to 3250 to 3550. Sorry, 3450. इस लेवल में नीचे मिलता है बाई करो, ऊपर मिलता है तो सेल करो. That's how one should trade. Dinesh sir, your view, your chart. What does the chart of TCS suggest? Gaurav, like I said, So your I voice is very expect, feeble. yeah, I said, I am expecting IT to do some Nifty management from here onwards, because especially when Bank Nifty is so horribly battered and रिलायंस भी कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है मार्केट को, तो किसी को तो आना पड़ेगा ना सामने निफ्टी संभालने के लिए. तो दैट स्लाइड ऑफ द इंडेक्स व्हिच इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट 1 week, द ओनली सेक्टर आई एम लुकिंग एट which could do it is the IT sector, and it's at a good support now of 3350. जब तक ये है इसमें
गुंजाइश है तब तक, 3350 जब तक है गुंजाइश है इसमें, वापस ओके चलेगा। ओके नहीं तो यू कैन इमेजिन कितना केओस हो जाएगा अगर सब हेवी वेट्स एक साथ टम्बल करने लग गए नॉन स्टॉप। एब्सोल्युटली, मतलब that will be a doomsday in Nifty then. Okay, I think एक short bounce हमने देखा था मार्केट में नियर 19355 360. Now we are back to 19339. That is the day's low. So there is this selling seen on any uptick. 15-20 point uptick is being sold into. So the scenario doesn't look good. And I think the put spread which you have suggested, Rajbhai, was perfect because यहाँ पे थोड़ा jittery होगा market. 20 point का upside, 20 point का downside आएगा, and put spread will not give you any blood pressure problem because it's that is why put spread is meant to be. That is what put spread ka job is basically. Yeah, Okay, I'll Gaurav, take some questions. Yeah, just Gaurav, one, yeah, yeah. when Sumit was explaining the features of ICICI Direct, उन्होंने हाइकेनेशी का बताया था उसमें कि एज हाइकेनेशी। सो इवन इन हाइकेनेशी अगर आप पूरा दिन का कोई भी एक देख लो, कोई भी टाइम फ्रेम देख लो, you look at it in 5 minutes also in the last 2 hours, एक ग्रीन हाइकेनेशी बार नहीं बना है, एक भी ग्रीन 5 मिनट में भी नहीं। तो दैट जो एज अ ट्रेडर जो हम लोग को होता है ना बायस खुजली करने का, नहीं लॉन्ग करते हैं, बॉटम बन गया, ये बन गया, वो है ही नहीं स्क्रीन। यू आर बीइंग माना नॉन स्टॉप ब्रूटल हिटिंग हो रहा है आज एकदम पूरा एकदम। तो वही है एकदम आइदर दैट्स व्हाई आई सेड ना, अगर हमारा बायस है वी ओनली लुक एट द बाय साइड, दिस इज द डे यू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट एकदम। या देखो, And if you're a non-directional trader, this market is not for not the non-directional trader probably, at least today's expiry. So yes, I'll take some questions. We have viewers who are giving. Can you please tell your view on Wipro? Okay, we'll take the ACC one first. Is it good idea to average? Deepika ma'am, we have already told 19350 put is to be taken only with a put spread, not as a naked put. So please, in the put spread you cannot average. So Rajbhai, any view for, only because only you can recommend here. So people have gone naked in 19350 put. So any suggestion from your end? While recommending it, I've said that in the last, because we are entering into the last phase of the expiry, it is going to be the volatile, and even a 20 points move in Nifty can trigger the stop loss. So even now, if someone wants to enter, at that point of time, the total cost was 20 rupees. Even at CMP, the cost is somewhere close to 20 rupees. So Yeah, now it is at 22 rupees. Costing comes to 22. So if someone wants to enter, the recommendation from your end is 19350 put buy and 19300 put sell, costing total 22. That is the stop loss basically. 22 rupees stop loss. So at the end of the day, if market our views doesn't pan out again and we goes wrong, so you will be in the loss of 1100 rupees per. That's right. Yeah. So I think anyone who wants to enter 19350 put, please enter with a spread. You can buy 19350 put and you can sell 19300 put. That is at 15 rupees. Is at 37 right now. Total costing is 22. You again have the risk of 1100 bucks per set. I think that is the trade. And even please, this is the trade. No naked buying in 19350 put. Okay. Deepak from today's trading. I want to ask Raj how we can learn. Oh, Raj bhai, there's a question that in the comment section that people want. Please explain put spread. Sir, put spread, we'll explain. We cannot explain right now because we are giving market view. बस आप इतना समझ लीजिए put spread is something, suppose you buy, or if you buy a naked call or put, you keep a stop loss, and if you make a spread, that stop loss becomes your entire position. So basically you hedge your losses. You do not have unlimited losses. You have limited losses when you go in with a spread, and you have limited profits. So depending on the risk to reward ratio, you make spreads. That's all I can give you in a very layman term. Deepak sir, I'll take a question later. We have somebody asking view on ACC and Metropolis. So Rajbhai, any view? Do you cover ACC and Metropolis? If yes, there are two strikes that someone is asking about. See, F&O stocks, and we have to look at all the F&O stocks. So yes, we look at ICICI also, and overall entire cement pack, I would say, is a bit resilient now. Despite weak results, we haven't seen much of profit booking, whether it's a sectoral leader Ultratech or the rest of the stocks.
So yes, ACC, Ambuja, Ultratech, I would say they remain in a positive frame of Okay. mind. और Okay. बात करते करते आपका नया लेवल Nifty 327 I'm seeing in spot. I think बात करते करते put spread value is also 25 from 22. So that is the beauty of spreads at this juncture. If Nifty goes below 19300, then you will make unlimited. You will have great profits. That's like at least you'll have what 28 29 points profit पक्का है अगर 19300 के नीचे गए तो. Right, Raj bhai? Yes, yes. Perfect. I'll take some more questions from the chat box. Thank you, Milind sir. Thank you so much. Abhijit Ghosh is asking on UPL. Dinesh sir, do you have any view on UPL? Anything on your chat check? Gaurav Joshi, we'll discuss this later. We want to teach you guys options. We have these webinars on Friday. Friday evening, we conduct a webinar on options. We teach strategies, how to build strategies, everything. So you can join our webinar on Friday evening. It's taken by Sumit at 5:30 p.m. So you can join us there. We are educating retailers since April. We'll start a fresh. We'll share the link on Telegram on our Telegram channel, so you can join our Telegram channel for these updates. Milind sir, I'll send Raj Deepak's Twitter ID for sure. Okay, Dinesh sir, UPL view on UPL. Yeah, UPL is at a at a bullish harmonic in the weekly, but अभी तक reversal confirmation नहीं आया है उसका. So I would prefer to see at least a daily close happening in it above 625 to consider it as a reversal. नहीं तो जैसा जा रहा है वैसे ही जाएगा. That I want to see that happen. That's a very crucial level. और इचिमोकू के हिसाब से भी बहुत strong support level पर आ रहा है 570. It's a very strong monthly support. That's why. But let a signal of turn come, then only I would look for bullishness in it. Otherwise, I would skip it for the time being. Okay, I think that's the view. We'll take some more questions. I have 250 CE for Canara Bank at 8.5 lots and Gale 125 CE at 1.56 lots. Any view? Oh God, I've taken very heavy positions. ICICI derivatives report for Bank Nifty. Shobhan, we release our performance of our derivative calls. So that the thing is that it is an audited thing. It has to go through an audit and all those stuff. So it takes some time, but we do release it. Rajbhai, we do release our derivative call performance, right? Yeah, we do release in our performance scorecard, Yeah. and also I believe that he is asking for our reports. So we do release our regular reports. We Okay. have a weekly report on Monday and a daily report uh, from Tuesday to Friday. Yeah. So we do release our morning report. The view is mentioned over there. So viewers who are on our Telegram channel, the index snapshot portion which comes in every morning, Nifty, Bank Nifty, and stocks which are in FNO ban, and also the index Bank Nifty and Nifty option chain analysis along with stock buildup. That is our derivative report for that day, and it is shared by Raj Deepak's team only. So we do post it on every Monday, every day. The topic for that on Telegram channel is index snapshot. You can watch that report out at 9, anywhere between 9 to 9:15. We release that on our Telegram channel. So if you want to look at it, please join our Telegram channel and you can have access to these reports. Okay. Wipro. Okay, we'll take Rajbhai is not that positive. He has no view on IT right now. So Dinesh sir, will you take that Wipro chart view on Wipro? Yeah, Gaurav, Wipro is among the few IT stocks which is much better off compared to the others. वो पहले laggard था, अब वो much better off है, compared to the whipsaws we are seeing in other IT. Wipro is something above 407.8. We would start again, probable up move again. Wipro much better off than all the other IT picks right now in my reading. So, Okay. and good support sitting around at a good support, but जिस तरीके का market क्यों चल रहा है, अगर समझे और नीचे गिरता है तो another $7-8 can go. Okay.
Yeah, there is one viewer, Vivek Patel. He has massive position in options. So Rajbhai, even I will want your recommendation on this. He has got 250 call option of Canara Bank at 8.8, 6 slots. So can we just, Dinesh sir, can 250, we? Yeah, 250. 250. Yeah, 250 call option. अभी 325 चल रहा है. So it would be 350 then. Yes. 8.8 पे लिया है. Definitely an OTM. There's हाँ definitely an हाँ OTM strike. हाँ. It has to be 350 then. It's Typo from his browser. ना 325 चल रहा है और 350 बहुत दूर है with the bashing bank Nifty has got. It's come to a fantastic support now. But having said that, it's not given a signal कि यहाँ पर buying आ रहा हो या कुछ. अभी तक कुछ नहीं है. And earliest trail, short covering will happen in it. Earliest बोल रहा हूँ. If we see it sustain above 328. अर्लीस्ट अब 325 चल रहा है, तो एटलीस्ट उसके ऊपर चले तो कुछ सिग्नल देगा, नहीं तो वीक ही रहे तब तक. ओके राज भाई, योर व्यू, योर रिकमेंडेशन, शुड ही होल्ड? राज भाई, क्या उन्हें होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट कर देना चाहिए? क्या आप इस पे सजेस्ट कर सकते हैं? 8.8 पे बाई किया. देखो गौरव, कैनरा बैंक एज एन स्टॉक I do love it. I believe that there is a ample, very, very high chances of further up move, and these recent highs are nothing. But the problem is the way he has gone bullish, and that is through call options. So no, he should exit. Even if there is a recovery, there are very less chances that his stock will be able to, or his call options will come into the that will go close to even his buying price. तो अभी देखिए मार्केट 2 दिनों में हमारा करीब 400 450 पॉइंट गिरा है, तो यस, ऑन फ्राइडे यू कैन एक्सपेक्ट सम रिकवरी इन द मार्केट, but anything somewhere close to 335 to 340 for the time being, it should be utilized as an exit from these type of leverage positions जैसे call options है या ये सारी चीजें हैं. Otherwise, if it would have been in cash, I would definitely suggest him कि आप इसको hold करें. Okay. Another position that he has is Gale 125 call option at 1.46 lots. सर 3 लॉट तो अभी एग्जिट कर दीजिए ताकि Okay. आपको क्वांटिटी कम दिखे. Okay. एंड उसके बाद अगर रिवर्सल आता है, क्योंकि इसने स्टॉक ने जो अपना, मतलब इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि आपने पहली बात तो आपने 125 का जो कॉल खरीदा वो जस्ट प्रायर टू द रिजल्ट खरीदा, तो वो भी एक थोड़ा सा गड़बड़ है. रिजल्ट के टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और अगर करें तो फिर उसको इस तरीके से करना चाहिए कि आपके लॉसेस मिनिमाइज रहें विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस. तो आप पहले तो अपनी क्वांटिटी कम करें, और उसके बाद अगर मैं होप करता हूं कि स्टॉक शुड मूव बिलो 113, तो एक पोजिशनल बेसिस पे वो सपोर्ट लेके आप इसको रख सकते हैं. बट नॉट एक्सपेक्टिंग, आपका कॉल ऑप्शंस में पैसा बनना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्लियरली अगेन बिकॉज यू आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम. Yeah, that's right. It is at, and it is also trading at 1.1, so it is also giving him loss. And Gale का lot size is also humongous. मतलब अगर आप Gale का lot size देखोगे, तो it is one of the highest in the market, and I think lot size is 9150, and having 6 lots of Gale is, I think, around 55,000 quantity, more than 55,000 quantity. So that is a massive exposure. I think, sir, you should be thoda careful. That's more. Vamsi, we won't advise on IRFC and all. We only take FNO stocks. So Vivek sir, you're welcome, but please be careful. Do not do over position. If you have so much of capital, deploy via spreads. Spreads are safe. They do not give you jitters. They don't make unlimited profit, but they also not have unlimited loss risk there. So that's all I can say from my experience and trading journey. Rajbhai, I'll take few more questions. Someone's asking you on HAL and Asian Paints. So Hindustan Aeronautic Limited and Asian Paints. Are you tracking these? I rest of the market, I believe HAL may retrace a bit. अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में स्टॉक जो है करीब 30% चला है, तो इट वाज समवेयर क्लोज टू 3000 इन द मंथ ऑफ जून, and it has almost tested 4000 just a couple of days back. So यहाँ पर बाई करने की मेरी हिम्मत नहीं है. अगर आपके पास है तो यू कैन लुक एट
प्रॉफिट बुकिंग और सम ट्रेल स्टॉप लॉस, बट अगर कोई मुझसे यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहा है, देन आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट Okay. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे. इट. There has been a pause in markets movement if you see from past 10-15 minutes. ठीक है. 19,300 put option now has almost 2 crore हुआ है. 19,400 already has 2 crore हुआ है. So right now, given the data, the range looks like 19,400 and 19,300. If somebody is an option seller, can 19,350 straddle be a good trade because it is trading at 62 rupees? And given the range, you are anywhere between 19,300 and 400. If the market expires, you will make money. So can somebody look at 19,350 straddle as a trade? Gaurav, it's not a normal day and it's not a normal expiry. Okay. If you look at the bank Nifty, your Nifty has been somehow consolidating. Your bank Nifty is making new lows. That time also I've said what I've said कि आपका जो पिछला डिक्लाइन था उसका प्राइमरली कंट्रीब्यूटर थे निफ्टी स्टॉक्स और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा बैक सीट लिया. इस राउंड में जो अभी हम लोग ने देख रहे हैं इसमें बैंक निफ्टी हैज टेकन द लीड. और व्हेन योर बैंक निफ्टी स्टार्ट्स फॉलिंग ना, वो फिर कुछ नहीं देखता, वो सबको खत्म करके जाता है. तो सी, नो स्ट्रेडल, नो रेंज बाउंड स्ट्रेटजी फॉर द डे. Okay. I have all the right to go wrong, but Yeah. that is Okay, so we will not look at it. I'm just seeing the data and asking you. मतलब there is मैं कोई no, recommendation नहीं है. You are the expert. कि आप जो हम लोग ये डेटा देख रहे हैं ना, ये किनकी पोजीशन है? ये उनकी पोजीशन है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो बड़ा लॉस कर रहे हैं और एक के बदले 2 लॉट सेल मार रहे हैं, या वो लोग पोजीशन है जो होप कर रही है कि नहीं नहीं 200 पॉइंट गिर गया है, अब तो मार्केट में रिकवरी आनी चाहिए. जो 200 है वो 300 क्यों नहीं हो सकता, या 200 वाला 100. मतलब आप ये समझो कि आप अभी भी 19,350 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपने मुझे बोला कि 60 रुपीज का उसमें प्रीमियम मिल रहा है, राइट? Yeah. सो अगर आप उसको 19,300 का स्टॉप लॉस और 19,400 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलो तो करो, बट यू शुडंट लीव दैट ट्रेड फॉर द एक्सपायरी. Okay. Just have an stop loss. वो तो in case for every trade, see market, what you are playing is the for theta, and theta is the वो क्या बोलते हैं कि सर्वोपरि है. Right. आपका सब कुछ जाएगा थीटा. आप अगर थीटा कमाना सीख गए तो यू आर ए किंग. तो आपको उसमें थीटा कमाने के लिए इफ यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस यू शुड डू इट. Yes. बट बात करते करते वही मैं बोल रहा था कि बात करते करते we are approaching another, we have made a fresh day's low. तो I think your view of staying negative is working really well. I think यही चीज के साथ चलना चाहिए. And our spread is also around 26 rupees. So there has been a 4 rupee gain. यहाँ पे वो भी सही चल रहा है. And लो रिस्क लो रिवॉर्ड. no, yeah, exactly. There is really low risk, low reward. That is okay because after making 3x, 4x in 19,450, that's why I said 125. We recommended it at 30. It is almost 4x. 19,500, some would have entered, some would have not. That was near 58. You said 52, but 58 पे भी कुछ लोग enter करे थे. That is at 175. And 19,400, which was near 28, I think 26, 28. Now it is at 81. So it has been a phenomenal day. And as we speak, we are below 19,320 as well. So 19,317 का low बन चुका है. And it is just a one way traffic नीचे की तरफ. Okay, I'll take some questions, sir. Raj, can we know, Raj, sir, overall market experience? Raj, bhai, can you speak about your market experience? Someone is asking. Sir, Inzamam, sir, one second, Raj, bhai. Inzamam, sir, we do not take HFCL, so please, we are only covering FNO stocks. So HFCL is a cash stock. We are not having any view there. Yeah, Raj, bhai. So I joined market in 2007 and I joined as a derivatives analyst. So I was never a technical analyst or fundamental analyst. From the day one, what I learned is about derivatives, how to read the data, how to look into other things. Yes, over a period of time, earlier it used to monthly expiry. With weekly expiry, you need to tune yourself a lot. So, but whatever experience I do have of last 15 to 17 years, that is entirely into derivatives. Okay, Raj, bhai, kya 19? We are now. There's no stopping. 19,313. So, okay.
देखो भाई 2 बज हाँ, गया, हाँ, ठीक है ना, हाँ, टाइम फॉर लंच yeah, एंड जिनका मतलब आई एम सॉरी गाइस बट आई हैव सम important yeah. note to I know you have some engagement for the day. So viewers, Raj won't be able to continue with us. So that's where I think we end our expiry trade here because it's almost fag end. And before going, Rajbhai, can we how can we just get your final view? Are you still negative? I'm not positive, so don't buy call options again. Okay, so It's more about you made your day, you made your trade. Okay, at some point of time, law of averages says that you also can go wrong. yeah, तो मुझे रॉन्ग जाने से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पैसा लूज करने से प्रॉब्लम है. So why should I right. lose? That's right. That's right. So that's it. So we end our we can end our live stream here. So that would be perfect. Okay, so viewers, thank you for joining us. Also, if you like what we do on expiry day, we will be coming next Thursday as well. Please hit the like button, and if you have really loved Rajbhai's view and also the Dinesh chart views, you can please give us a shout out on the social media handles from your handle. You can tag ICICI Direct and whatever you can write. It's up to you. So thank you so much for joining during this expiry trade. We will see you next Thursday. Thank you so much. Bye bye, everyone. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.